So here in Srimad Bhagavatam, 10th canto, chapter 29. Now we're verse 7. Yesterday we're hearing. Some Rajasundaris, they were milking the cows. They also stopped doing that. They left. Another was making cakes. They also left. Some were feeding children, some serving the husband. They left everything and they went running towards Krishna. Some gopi was applying kumkum in their bodies. Some was applying kajal. So in whatever condition they were, they just ran to Krishna. So their hair and clothes were completely in disarray. So in that condition, they just, whatever condition they were, they just came to meet Krishna. गोपी ने उस देह और दैहिक आवेश तक त्याग कर दिया था। इसलिए संबंधों में लिम्पंत आदि श्लोक के द्वारा बताया जा रहा है कि कोई कोई गोपी चंदन आदि के द्वारा अपने देह का अनुलेपन कर रही थी, कोई उपटपन लगा रही थी, वो सब क्रिया को छोड़कर ही चल पड़ी। So they left whatever they were doing. They just came to meet Krishna. उसी के लिए व्यस्त So the ornaments and clothes were complete in disarray. They rushed off to Krishna. So verse 8, 29th chapter, 10th canto, verse number 8. Barjamana means these gopis they were like checked by the husbands. Like they tried to stop them. Their husbands, fathers, brothers, and other relatives tried to stop them, but Krishna had already stolen their hearts. Enchanted by the sound of his flute, they refused to turn back. So the commentaries explain very well. So they left everything, they came towards Krishna. So their husbands tried to stop them, but they didn't stop. They just ran away because they had so much anurag for Krishna. So this anurag, deep attachment they had for Krishna, just like dragged them. So even though their husbands, fathers, brothers, and other relatives tried to stop them, they refused to return back.
because Krishna had already stolen their hearts. क्योंकि गोविंद के द्वारा उनकी हृदय क्या हो गया, अपहृत हो गया। Their heart was already taken by Krishna. इसलिए कहते हैं गोविंद अपहृत आत्मनो, गोविंद के द्वारा आकृष्ट चित्त होने से, गोविंद अपहृत आत्मा। और दूसरी क्या है ना, गोपियां इतने मोहित होकर कृष्ण के समीप आने लगे, The gopis were so भी absorbed going towards Krishna पिताओं अथवा पति भी, भातृ बंधु भी, उनके भ्राताओं, मित्र आदि, their friends, their relatives निवारण किए जाने पर भी tried to stop them, न अन्न बर्तन वो भी लौटे नहीं, but they refused to turn back. अनुवर्तन तो थे वो लौटे। यहाँ पर कह रहे हैं उनकी आत्मा भी गोविंद की हरण कर लिया था, इसलिए Their heart was taken by Krishna already. सीता अर्थात सूत्र संचालित पुतली के भांति वे चली गई। यदि आपत्ति हो अपने प्राण जाने की अवस्था होने पर भी पति आदि कभी कभी पत्नी के देह की अप्रतिष्ठता और कलंक की भय से उनका जाना सहन कर नहीं सकते। इसके उत्तर में कह रहे हैं कि सत्य है, किंतु यहाँ विपरीत क्रिया हुई। उनका समाधान जोगमाया ने किया। जोगमाया ने उसी प्रकार उन गोपियों की जैसे मूर्ति प्रकट कर दी थी, इसलिए पति अपने अपने पत्नियों और पिता आदि अपने कन्याओं के साथ लौट रहे, ऐसे विश्वास कर वे अपने अपने घर में लौट आए। इस बाद में दिखा जाएगा। यहाँ पर जो बोलते जा रहे हैं, So it is being explained here. कृष्ण के बंसी वादन सुन करके कितने प्रकार के गोपियां So hearing the sound of the flute, माने भगवान के पास मिलने के लिए जा रही थी। उसमें बता रहा है एक तो नित्य सिद्धा जो गोपियां राधा आदि, okay, which gopi was going to meet Krishna? The Nitya gopis like Srimati Radhika. इसी प्रकार What happened? Jogamaya didn't stop them at all to meet Krishna. Their parents, no one stopped them. स्वाभाविक स्वच्छंद गति में गोविंद के निकट। Without any problem, they were able to just meet Krishna. दूसरी कौन रह गया? Okay, who else was there? The Sadhana Siddha gopis साधन की सिद्धि प्राप्ति, that had attained the perfection in the sadhan. गोपी देह प्राप्ति। They had attained the body of a gopi. उस गोपी में दो प्रकार की भी फिर कह रहे हैं, साधन सिद्ध जो गोपियां, जिस So two kinds of Sadhana Siddha gopis. नित्य सिद्धाओं के संग भी करते हैं। Some gopi that had already attained the association of the Nitya Siddha gopis. And because of the fruit of this association of the Nitya Siddha, प्रगाढ़ क्या हो गया? अनुराग उत्पन्न। they had developed deep attachment for Krishna already. इसलिए जोग में भी उनको लेकर के चले। So Jogamaya also took यहाँ them. पर एक विचार दिखा रहे हैं। So one conception is shown, लोग भी तो उनके भी कुछ माना तो किया, कहाँ जा रही like their husbands were trying to tell them not to go, like, oh, like some impediment, like, now it's nighttime, where are you going? Because if it's during the day, you can go anywhere, no problem. समय कैसे था? But that time was like in the evening time, middle of the night. कृष्ण जो बंसी बजाया, गोपियों की जो बुलाया, When Krishna played the flute and called the gopis, रात्रि के समय, it was evening time. रात्रि के काल होने के नाते So because of this, उनके पति लोग कहने भाई तुम इतने रात में कहाँ जा रही हो? their husbands would say, what are you going to do late at night and all this. इसलिए उनके पति लोग भी उनकी रोके। So their husbands tried to stop them, but Jogamaya उसी समय वो गोपियों के एक प्रतिमूर्ति बना दिया, made another, like a statue of the gopis. Pratimurti, like a statue. उस प्रतिमूर्ति के ये लोग उनके पति लोग सोचने लगे ये हमारे साथ ये लूट करके घर आ रही है। So the husband thought, oh, लोग में ऐसे actually the gopis are in the house. So Jogamaya arranged that. ये Don't open it. छाया इधर है, तो ढक
करके रहता था। आप सामने बताइए, सामने बताइए। हाँ गोपी, हाँ, जब कीर्तन होगा तब मैं क्या, Time of हाँ मैंने क्या Kirtan? बोला, Yes, but now not yet. बोधि मूर्ति बना के, हाँ, और वो समस्त गोपियों के घर में लोड करके लाया, है कि नहीं? इस So, तरह like अपने statues of the gopis were kept in their house, and the real gopis came to meet Krishna. पत्नियों और पिता आदि अपने अपने कन्याओं के साथ लौट रहे, ऐसे विश्वास कर वो अपने अपने घर में लौट आए। इन सभी गोपियों की सजाति धर्म आदि के त्याग के विषय में सुनने पर स्पष्ट जाना जाता है कि श्री कृष्ण निकट जाने से पहले उनकी सभी धर्म कर्म आदि यथायथ चल रहे थे, किंतु कृष्ण के वंशीनाद से उनके ये समस्त धर्म कर्म आदि सब So when they heard the sound of the flute of Krishna, everything they were, all their dharmas, सभी गोपियों everything के हृदय didn't श्री matter. कृष्ण प्राप्ति के लालसा से व्याकुल रहता था। Gopis were so eager to meet Krishna. उन्होंने बाहर की व्यवहार में श्री कृष्ण सेवा के अतिरिक्त स्वजाति धर्म आदि का आभास दिखाई दिया। वो सभी साधन सिद्धा गोपियां थी एवं श्री कृष्ण They के were साथ sadhana siddha gopis. प्रथम मिलन था। It was their first meeting with Krishna. मैंने पहले ही कहा दिया, एक तो साधन सिद्धा जो है, नित्य सिद्धा जो है, So I said, किसी प्रकार रोकथाम नहीं, they need to see that they were not ना जो मैं stopped. उनके कोई प्रतिमूर्ति बनाया ना कुछ। Jogamaya didn't make a statue of them, nothing. It was not necessary. नित्य सिद्धा गोपियां कैसे गई? So how the Nityasiddha gopis they went? मैंने उनके पतियों के मन में एक भ्रम उत्पन्न करा। Jogamaya created like an illusion in the mind of their husbands. हाँ? ये मेरे पत्नी जो है पड़ोसी के घर में गई है, The husband was thinking, "Oh, my wife has just gone to the house of the neighbor. She's about to come back soon." कारण से पड़ोसी के घर में गई, She went to the house of the neighbor for some reason, but she's about to come back. ये भ्रम उत्पन्न, So Jogamaya created this इसलिए illusion नित्य के किसी प्रकार रोकथाम नहीं। in the head of the husbands of the gopis. That's why the Nityasiddha they were not stopped to go anywhere. The Nityasiddha were not stopped. इस कथा राधा आदि गोपियां नित्य सिद्ध है, इनके कृष्ण के सेवा का अधिकार प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार की साधन का अनुष्ठान नहीं किया। वे अनादिकाल से कृष्ण की प्रेम सेवा करती आ रही हैं। The sadhanas and the gopis they were for a long time already serving Krishna and tried to, like doing sadhana and bhajan from time they were serving Krishna. कौन? राधा आदि गोपी। Ah, sorry, the Nityasiddha gopis they were performing this service since time immemorial. Yes, like Radha, Lalita, etc. इसलिए नित्य सिद्धा गोपियों की नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम को रागात्मिका भक्ति कहा जाता है। रागात्मिका भक्ति किसको कहा जाता है? What is Ragatmika Bhakti? राग आत्मिका रागात्मिका, जिनके हृदय में स्वाभाविक रूप में जन्म सिद्ध के रूप में कृष्ण के प्रति So in their hearts अनुराग था, इसलिए उनके कहा they have this anuraga, since this deep attachment for Krishna inherent to them from birth. They have this. How do you recognize they are Ragatmika? Tell me. क्या बता रहे? नहीं है कुछ। You're not hearing anything, huh? You don't remember anything? सारसिक राग परम अभिष्टता भवित तन्मय तो भवित वो सा रागात्मिका को दिखा। थोड़ा श्लोक तो याद करना पड़ेगा। You should memorize some shloka. रागात्मिक जन किसको कहते हैं? Who is called Ragatmik Jan? और रागानुगा जन किसको कहते हैं? And who is called Raganuga Jan? इष्टे सारसिक राग परम अभिष्टता भवित, अपने इष्ट के प्रति कैसे रहते हैं? दो लक्षण। So two symptoms. इष्टे सारसिक राग, अपने इष्ट देव के प्रति स्वाभाविक They have a spontaneous अनुराग रहता है। attachment, anurag for their worshipable deity. Second point, अभिष्ट, Param Abhishta, completely absorbed, always. अभिष्ट होकर के वे सब रहते हैं। ये रागात्मिका जन के जन नित्य सिद्ध जो है,
गोपियां जो These है the राधा आदि symptoms of the Nitya Siddha like Shrimati Radhika, Lalita, ये etc. सात्विक रागो परम अविष्टता भवित और दूसरी क्या तन्मयी And completely absorbed they वो are. तन्मय होकर रहती बस कृष्णमयी कृष्ण राधा अंतरे बाहिरे जहाँ जहाँ नेत्र पड़े तहाँ कृष्ण स्फुरे कृष्णमयी मई शब्द करता तन्मय होकर रहती Mai means always completely absorbed. जो कुछ भी दिखाई पड़ता रहता है कृष्ण छोड़ करके और कुछ दिखाई नहीं पड़ता They don't see anything else other than Krishna. यही है जिसे कहते हैं कृष्णमयी कृष्ण राधा अंतरे बाहिरे अंतर और बाहर में क्या दिखाई पड़ता है Inside and outside, what they see only? कृष्ण छोड़ करके और कुछ नहीं Only Krishna, nothing else. कृष्णमयी कृष्ण राधा अंतरे बाहिरे जहाँ जहाँ नेत्र पड़े तहाँ कृष्ण स्फुरे सब कृष्ण स्फूर्ति है They only see Krishna राजमें everywhere. जो कृष्ण के नित्य पार्षद है कृष्ण के जो स्वरूप शक्ति स्वरूपनी राधा जी के जो काय हुआ स्वरूप है वो सब लगात So the Kayavyuha of Shrimati Radhika, यहाँ तक कि these gopis or bodily expansions of Shrimati Radhika, they are all Ragatmika Jan. Even the devotees in Dasas, Sakavatsali from Goloka Vrindavan. यहाँ तक भी वैकुंठ में Actually, even the devotees in Vaikuntha, ये सभी रागात्मिक जन है Ayodhya, they are all Ragatmika Jan. ये सब कृष्ण ये सब भगवान के नित्य पार्षद है इनके आत्मा में क्या है So they are all, इष्ट देव के प्रति प्रबल अनुराग है they have so much anuraga for their worshipable deity. अपने रस Sarasika means according to their own rasa, वो राग रहता है they have that rag attachment according to their rasa. हनुमान जो है हनुमान ये क्या है रागात्मिक जन For example, Hanuman is also a Ragatmik Jan. जो हम लोग ब्रज में जो लगाते हैं उसके ब्रज रागात्मिक जन लगा दी But when the devotee is from Vrindavan, then you put the name Braja in the beginning. Braja Ragatmik Jan. क्यों ये भगवान की नित्य सब परिकर है They are all eternal associates of Bhagavan. ब्रज रागात्मिक जन कहने से And if, when you say Braja Ragatmika Jan, you have to कृष्ण के स्वरूप शक्ति स्वरूपनी राधा रानी वो राधा रानी की एक एक मानव have to understand that they are bodily expansions Kayavyuha of Shrimati Radhika. Shrimati Radhika manifests this one form of the gopis. आनंद चिन्मय रस कृष्ण तो रस स्वरूप कहा गया रसो रस वही Krishna is Rasa Swarupa. भगवती अखिल रसामृत सिंधु पश्चिम च रुधिरुद्ध तारका पाली कलित श्यामा ललितो राधा प्रयाण विधुर्य इसलिए ये समस्त जो है He is the embodiment of all the mellows. So these devotees are called Ragatmik Jan. राधा आदि ये सब क्या है रागात्मिक ब्रज रागात्मिक So Shrimati Radhika etc. they are called Braja Ragatmik Jan. इसलिए रागात्मिक जन की लक्षण क्या है So their symptoms is that अपने रस के अनुसार सभी क्या है डूबे हुए हैं। all of them are completely immersed, इसलिए सारे always in their own rasa of service to Krishna. भवित And another point, सदा श्रद्धेय they are always completely अभिष्ट होकर रहा absorbed. इस प्रकार विषयी Just like संसार में जो विषयी लोग मेटेरियलिस्ट materialistic person in this world, विषय में क्या रहता है अभिष्ट होकर they are always also completely absorbed in the material things. बैठने में Sitting, sleeping, चिंता में like all the time, they are completely absorbed in material things. So in the same way, रागात्मिक the Nityasiddha gopis, they are Ragatmik. लोग अपने रस के अनुसार कृष्ण में अभिष्ट रहते So they are absorbed in Krishna according to their own rasa. इसलिए सारसिक रागो परम अभिष्टता भवित तन्मित भविदुषा रागात्मिक का इसलिए बुद्ध गण माने पंडित जन So the क्या Pandits, कहते हैं they say रागात्मिक जन का that they are called the Ragatmik Jan. इसलिए नित्य सिद्ध गोपियों की नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम की रागात्मिक भक्ति कहा जाता है यदि जगत में किसी भाग्यवान जीवों की साधु संग के If a fortunate jiva in this world, by the influence of Sadhu Sangha, के विषय में श्रवण कर उस भाव को प्राप्ति करना की लालसा होती है if the jiva has the desire भक्ति अंग का to attain अनुष्ठान कर this bhava of the Nityasiddha Vrajavasis, यह प्राप्त करता है the jiva has to perform the proper sadhan
and then he'll be able to attain the form of a gopi, and his service to Krishna will be successful. जो भागवत कथा श्रवण कर रहे So when we hear Bhagavad हैं, Katha, कथा श्रवण कर रहे हैं, ये रागात्मिक जन, actually we're hearing the Katha of this Ragatmika Jan, these Vrajavasis, the Katha of Radha, Lalita, Vishaka, etc. श्रवण से हमारे So when we hear about them, उनकी सेवा की भाव प्राप्ति के लोभ उत्पन्न हो जाते we'll have the lobha, the eagerness to serve like them. हैं। किंतु यहाँ पर एक विचार जो विषय होता But there's one point here. हो जाता है, Yeah, maybe lobha will come in our hearts, अनुगत्य में सेवा होनी चाहिए। but we have to serve under their guidance. स्वतंत्रमय सेवा में करने जाए, If you go to serve like independently, then it won't be good. It won't work out. स्वतंत्रमय नहीं, अपने We should serve अनुगत्य सेवा under the guidance. है। इसलिए नित्य सिद्ध जो है गोपियां जो है उनकी स्वतंत्रमय सेवा कहा गया। The Nitya Siddha Gopis, they perform service independent, but the Sadhana Siddha Gopis, they have to serve, they serve under the guidance. Try to understand that. परम अविशुद्धा होइत तन्मय तो भवेदुसा रागात्मिका और रागात्मिका अनुसिद्धा सा रागानुग उच्चते है। ये साधन सिद्ध भी हो जाते थे, सब साधन सिद्ध होता है। जैसे आप भजन साधन कर, Like for example, you're performing bhajan and sadhana. साधन की तात्पर्य क्या है? हरि कथा आदि श्रवण, What is the meaning of bhajan and sadhana? Hearing Hari Katha. उस कथा को श्रवण करके आपके हृदय में क्या होगा? Then when you hear Hari Katha, you feel the lobha, the eagerness. जैसे चलो वात्सल रस की कथा है, माँ यशोदा Suppose Vatsala Ras Katha. क्या करते हैं? सेवा करते हैं, Nanda Jashoda, स्नान करा रही है, Mother Jashoda is serving Gopal, is bathing Gopal, dressing up Gopal, is breastfeeding Gopal. जिस प्रकार इस जगत में माता पिता अपने पुत्र कन्या के वात्सल्य भाव से So just like parents, they also serve their kids in this world with full of Vatsala Bhav. In the same way, इस जगत में नंद यशोदा in the transcendental world, Nanda Jashoda रस में सेवा करते हैं। are serving Krishna. की कथा सुन करके आपके हृदय में क्या उत्भाव होगा, क्या लोभ उत्पन्न होगा? So when you hear this katha, भी माँ you also यशोदा think, की भांति ऐसे सेवा प्राप्त करो, हैं? I want to also serve in this like mode of Mother Jashoda, serve like her. But there is one point, कि आप कृष्ण की जो सेवा तो करो, वात्सल्य भाव से कृष्ण की सेवा you करो, you serve Krishna in Vatsala Bhav, yes, अनुगत्य में but under the guidance of Mother Jashoda. आप संग यशोदा नहीं बन सकते। You cannot become Mother Jashoda. अपने के यशोदा मान करके यदि कृष्ण सेवा करो, If you serve Krishna thinking you're Mother Jashoda, then that service is actually called पोषणा हो जाता है, Ahangraha Upasana. अहंग्र पोषण है। ये अभी ये मायावादी के दल में चले जाएंगे। So then you'll become like a Mayavadi. क्या बोला? What did I say? पोषण, अहंग Ahangraha Upasana. अहंग्र पोषण। याद रखना, You remember that अनुगत्य नहीं रहता है, because you will not be under the guidance. फिर आपके विपर्जय हो जाएगा। So then it won't be good actually for you. इसके ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए करें भक्ति के अंग के साधन का अनुष्ठान सिद्ध दशा में गोपी देह प्राप्त करना है एवं यथाचित कृष्ण सेवा पाकर कृतार्थ हो जाता है। So when you attain the body of a gopi and serve under the guidance of Nitya Siddha, then your spiritual practice is successful. कोनो भगवान लोभे ब्रजवासी भावे करे अनुगति शास्त्र युक्ति नहीं माने रागानुगार प्रकृति बाह्य अंतरिहार द्वैत साधन बाह्य साधक दे करे श्रवण कीर्तन मने मने सिद्ध देह करिया भावन रात्रि दिने करे ब्रजे कृष्ण सेवन। चैतन्य चरितामृत में वर्ण हो रहे हैं। Chaitanya Charitamrita explains एक साधक how a sadhak ये रागात्मिका भावों के कैसे प्राप्त करे। will attain this Ragatmika Bhav. ये रागमय भक्ति है, रागात्मिक जन नित्य सिद्ध जो परिकर उनके हृदय में तो राग रहते हैं। The Nitya Siddha Parikas, they have this rag in their ऐसी कथा hearts. सुन करके अर्थात रागात्मिक जनों की कृष्ण सेवा की कथा सुन करके हृदय Hearing में about the katha of the Ragatmik Jan, उत्पन्न होता है। so then we develop this lobh in our hearts. यदि कथा नहीं सुने लोग कहाँ से So if we don't hear Hari Katha, lobh will not come. अधिक जोर दे। That's why I have to give emphasis in hearing Hari Katha. श्रवण शुद्ध होगा The more you listen in a pure way, उतना ही उनके हृदय में लोभ उत्पन्न the more the lobha will come in your heart. है। इसलिए कहते हैं लोभे ब्रजवासी भावे करे अनुगति। इसलिए लोभ के द्वारा ब्रजवासियों के क्या करेगा? अनुगत करेगा, अनुगत्य स्वीकार करेगा। जैसे मैंने कहा वात्सल रास में, And because of lobha, you'll become under the guidance of these Vrajavasis. किंतु यहाँ पर कह रहे हैं शास्त्र युक्ति नहीं माने रागानुगार प्रकृति।
शास्त्र युक्ति आदि के द्वारा स्थापन नहीं कर सकते। You cannot establish that by the logic of the scriptures. Lobha, greed, is such a thing that द्वारा नहीं cannot attain it by एकदम लोभ क्यों हो गया? jukti, like logic. Oh, why that person has lobha, for example. लोभ कैसे If you say, how possible lobha is in the heart of that person? मेरी कथा श्रवण करके लोग उत्पन्न हो जाते You can get that lobha, the eagerness, listening by hearing Harikatha. प्रेममयी कथा में ये विशेषता है। इस कथा को जितने शुद्ध रूप में श्रवण किया जाए, कैसे श्रवण हो, The more you listen in a pure way, मन को इधर उधर भटकते हुए श्रवण करे, if you're here उत्पन्न नहीं हो। with your mind going here and there, then eagerness will never come. यदि श्रवण कीर्तन तो वो नहीं Maybe for 1,000 years, for 1,000 lives, you're hearing Harikatha like this, not properly, then you'll never develop lobha, eagerness. हो जाएगा। फिर कार्य कोटि जन्म करे, First you say, okay, if you hear Harikatha, you get lobha, but also maybe you cannot get if you're not hearing properly, even in 1,000 births. इसलिए श्रवण कैसे होनी चाहिए? So how should you hear? होकर के। With completely fixed minds. देख रहे हैं और You're checking your mobile and at the same time hearing Harikatha, and also chanting holy names at the same time. अच्छा, आपके कितने काम एक साथ में चल रहे So how many things you're doing at the same time? हैं? आप मोबाइल भी देख रहे हैं, So you're checking your phone बाएं हाथ में मोबाइल पकड़ करके रखे हैं, in your left hand. दाहिने हाथ में क्या With रखा the right hand, you have Vajrapamala. है? और साथ में हरिकथा श्रवण। And at the same time, you're also hearing Harikatha. अरे वाह, Oh, very nice listener. You're a very good listener, huh? पता नहीं। हाँ, ये भी मैं ही कहता हूँ, जो उन्नत कटी के जो श्रोता होता है, उसके लिए संभव होता है। जैसे कह रहे हैं, Okay, for those who are very high class listeners, then it's different. घड़े में पानी भर लेते हैं, Like the हैं? Brajavasis. पर रखते हैं, 1 2 3 4 घड़ा तक They fetch water in the river, then they come back with maybe 3, 4 pots of water, like clay pots, balancing on their own heads, over their heads, and still also carrying a baby लेते हैं, ऐसे करके चलते in the lap. हैं। और देखो, The Brajavasis, they do this. बच्चा की भी कांख में ले लिया, हैं? यहाँ तक भी बच्चे को स्तन भी पान करा रहे, कांख में And लेके, even maybe they're breastfeeding the baby is at the same time. हैं? घड़ा भी ऊपर है, 3 4 घड़ा है, 3, 4 clay pots full of water on their heads, balancing on top of each other. और भी वो बात भी कर रही है, And still speaking also. हैं? हाँ समझिए। और देखो, ये भी आश्चर्य की बात, One more amazing thing. रखा, एक बच्चे को कांख में रखा, So one baby in the lap, breastfeeding, and also with the other hand, he's holding a baby, like a baby in the hands. कार्य हो गया, So how many things at the same time they're doing? 4 कार्य हो रहा है, 4 things at the same time. हैं? ये एक होता है अभ्यास वशत, So they have this habit, this practice to do that. सारे लक्ष्य कहाँ पर रहता है? Also another thing is that बच्चा को स्तन पान करा के, do you think जो बच्चे को पकड़ do you think they are thinking about the baby that they are breastfeeding, भी कर रहे हैं, or the baby they are holding in the hands, है or घड़े पर, they are thinking about what they're speaking? No, their attention is actually in the clay pots. They are balancing. ऐसे स्थिर करके रखते हैं, They have to keep the head very, हिल जाए तो घड़ा the head very, how to say, hard. Like वो जगह तो गिर जाए। otherwise, I mean, they cannot move abruptly. Otherwise, all the pots will fall, all the clay pots. कारण ये दे रहे हैं। ठीक उसी प्रकार जो अनेकों दिन से भजन साधन आदि, So those who are performing bhajan sana for many days, तो उनके लिए संभव है। for them it's possible to do many things at the same time. Hear Harikatha, chant holy names. अरे मोबाइल नहीं देखता थे, No, but they won't check mobile. Mobile no. हैं? हरि कथा भी श्रवण कर रहे हैं, But they may hear Harikatha and at the same time chant holy names. हरि नाम भी कर रहे हैं, उनके लिए संभव हो जाता For them it's possible. है। किंतु साधारण But for a normal ये संभव sadhaka, it's impossible. It's not possible. है। हाँ समझे? Do you understand? अधिकार के लिए तो कभी संभव ही नहीं है। For the Kanishta Adhikari, it's not possible at all. मध्यम अधिकार के लिए भी Even for the Madhyam Adhikari, it's also not possible. नहीं संभव। For the Uttam Adhikari, it's possible. हरि कथा भी श्रवण भी कर रहे हैं, हरि नाम भी कर रहे हैं। So hear Harikatha, chant holy names. नहीं वो मोबाइल नहीं रखते हैं? तो तुम रखते हो ना, इसलिए कहते हो। वो मोबाइल के बस बंद करके रखते हैं, जरूरत हो जाए देखेंगे। So they have the Harikatha like turned off, and when it's necessary, they turn it कि on. उसी प्रकार जो In the है, time of Harikatha, no. So ऐसे कथा आदि श्रवण के बाद क्या होता है, उसके हृदय में क्या हो जाता है?
लोभ उत्पन्न हो जाता है कि मैं भी माँ जसोदा के भांति गोपाल के जो है वात्सल्य भाव में सेवा करूं। So they want to, they hear this katha and they think, oh, I'll serve like under the guidance of Mother Jashoda, like this. Or I want to serve in this mode of Mother Jashoda. But you have to be careful with Ahangraha Upasana. Like, should never think, I'm Lalita, I'm Mother Jashoda. If you think about those leelas in this mood, this Ahangraha Upasana, then you become like a Mayavadi. What to speak of doing bhajan, actually you fall down. You will fall down. इसलिए कह रहे हैं, अच्छा फिर कह रहे हैं क्या बोले, लोभ शास्त्र युक्ति नहीं माने रागानुगार प्रवृत्ति शास्त्र युक्ति के देता है। लोभ क्या है? So, lobha, eagerness, is something spontaneous that's actually coming from birth, inherent. Why? Because actually these people are performing bhajan from many lives. So this lobha arises naturally in their hearts. Sorry, they have the samskara, the impressions from many lives. And because of that, this lobha appears in their heart. Bhakti is such a thing that's never destroyed, bhakti actually. Shastra explains, whatever state that you attain in bhakti, Shara Sadhusanga Bhajana Karyanista Ruchi, the next birth will start from Ruchi also. Like the samskaras from previous life, they'll continue in the next life, and it looks like it's come inherent for in that life, but actually came from previous lives. So it's not necessary Shraddha. In the Raga Marga, you go very quickly from Shraddha to Ruchi. But in Vaidya Marga, you have to go step by step, take time. In Raga Marga, you go very quickly to all the stages. You pass also all the stages, but very quickly. Like suppose if you go to the top of a building, there are two ways to go to the top of a building. You can go by the stairs, or you can go by the elevator, by the lift. You can go by the stairs and pass by each floor, like touch each floor, or you can take the lift and go very quickly. So when you go by lift, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. You are quickly going by all the floors also. You also touch all the floors, but very quickly. So in the same way, if you already performed sadhana and bhajan in the previous life, from in this birth, this Shraddha Sadhusanga Bhajana Karyanata, you take very quickly to attain that. This is the meaning. It's not that from Shraddha you jump and come to Bhavana Shakti, but Raga Marg is like a galloping horse. Like a galloping horse. Like the horse is galloping so quickly. So in the same way, Raga Bhakti is also like that. Shastra explains. Raghunath Goswami explains. Just like a galloping horse. I want my mind to jump like this also. My mind is like a powerful horse galloping. Galloping horse.
चिंतन व रूप मंजरी के चिंतन भावना व सेवा के अनुगत्य में ही मेरे मन उसी प्रकार I want that my mind also gallop like this, actually serving under the guidance of Rupa Goswami, like the same modes. सिरूप चिंता मणिशक्ति संस्तो मत्संत दुर्दांतो भय सुरक्षा मेरे मन रूपी अश्व अश्व माने The hope that I have in my mind, दौड़ रहे हैं my hope of my mind is running, just like a galloping horse. किस भावना से ना With which mood? पाद की अनुगत्य में व रूप मंजरी की अनुगत्य में राधा जी की सेवा प्राप्ति To serve Radha Govinda है ये कह रहे हैं under the guidance of Rupa Goswami, Rupa Manjari. Raghunath Goswami explains. अन्नात् कदापि समय कीरदेवि जाचे सक्खायत मम रसस्तु नित्यं रसायते मम रसस्तु सत्यम हे श्रीमती राधिका यदि मेरे ऊपर प्रसन्न Hey Srimati Radhika, if you are pleased with me, आप यह वर प्रदान करें give me one benediction. राधा जी का क्या वर चाहते Srimati Radhika asks, what benediction do you want? चाहते Which benediction do you want? अजाब्द स्तव बिना वरदाश्रमेव आपके चरण कमल में मेरा और कुछ वर में प्रार्थना नहीं करता I don't want any of the benediction from you. What do you want then? राधा जी का चलो मैं प्रसन्न Srimati Radhika says, okay, I'm pleased with you. विशाखा आदि ऐसी जो सखियां जो है Lalita, Vishaka, etc., मेरा सेवा करती है they serve me. ये कहता प्राण पृष्ठ सखी ललिता सखी आदि है सती नित्य सखी प्राण सखी So 5 kinds of Saki. ललिता आदि की Saki Priya, Saki Prana, Saki Priya, Saki Prana, Prishta Saki. उसको मैं दे देता हूँ So Srimati Radhika will tell रघुनाथ दास गोस्वामी you, क्या कर रहे हैं told Raghunath Das Goswami, I want to give you the service like Lalita. वो सेवा मुझे But Raghunath Das Goswami said, oh Srimati Radhika, I don't want this service, I don't want this post. बिना बरदस नन्ना कदापि समय किल देवी जाचे माने Kila Devi Jacha means, है whatever you say, दे रहे हैं ये सेवा I'll give you. कौन सा ललिता विशाखा आदि Srimati Radhika is saying, oh, I want to give you the service of like Radha, Lalita, Vishaka. तो रघुनाथ दास बोले नहीं वो भी नहीं चाहिए But Raghunath Das Goswami says, I don't want that. पदाब्ज स्तविना वरदास्यमेव नन्ना कदापि समय किल देवी जाचे सखाए तो बोले सखियों की जो सेवा जो कार्य हूँ The service of the Sakis, बार बार प्रणाम I again and again perform, I bow down to the service of the Sakis. दासी पद वो मुझे प्राप्त कराई I just want to वो दासी पद attain कौन सा है? ना this service to you as like a dasi. कराई Please make me attend the service like a manjari. मंजरी के भाव सेवा तुम चाहती हो But the service of which manjari do you want? मंजरी के अनुगत्यमयी भाव सेवा The service under the guidance of Rupa Manjari. प्रदान कीजिए Give me that. हैं? इसलिए कार्य है सिरूप मंजरी करार्जित पाद पद्म गुष्टंदन भुजार्पित मस्तकाया आ मदत कनक गौरी पदार्विन सन्म्यानि सनकै तब किम करिस इसलिए कह रहे हैं लोभे ब्रजवासी भावे करे अनुगति शास्त्र युक्ति नहीं माने रागानुगार प्रकृति जो रागानुगार जो भक्त होते हैं Those who are Raganuga युक्ति Bhakta, के द्वारा वो अपने स्थापन नहीं करते they cannot be established only by the logic of the scriptures. Because maybe you can think, oh, I'm not qualified. तुम्हारे अभी So if you think you're not qualified, means you don't even have Raganuga Bhakti yet. के ये लक्षण Because one of the symptoms of Raga Bhakti is that exactly को वो you'll not समझते think about qualification. You don't give attention to your qualification. कि अनधिकारी You don't think, am I qualified or not? You're not even thinking about it. है क्योंकि कथा आदि श्रवण के द्वारा By hearing Harikatha, उनके हृदय में ये लोभ उत्पन्न हो जाता this lobe will appear in your heart. है इसी के एक नाम क्या है Another name of Raganuga Bhakti, do you remember what is the other name? भक्ति का Is Lobamai Bhakti. है रागानुगा भक्ति के एक नाम है Another name of Raganuga Bhakti is Lobamai Bhakti. किसके हृदय में उदित हो सकता है So if anyone can have this loba in their heart. घटना को देख करके Like if you see a princess, क्या बोलते हैं गाय चराने वाले जो even a shepherd or a cowherd boy, क्या बोलते हैं इसको how to call that? चरवाहट है Like a shepherd. विचार करते हैं इनके He साथ can also think, oh, I want to get married to this princess. शादी राजकुमारी उसके शादी करे ना करे वो तो If the princess will marry to him or not, this जो चरवाहट जो है depends on उनके मन में लोभ उत्पन्न हो सकता है her. But the shepherd or cowherd boy, he wants to marry. शास्त्र युक्ति और किसी के द्वारा वो बंधन नहीं
लोभ एक साधारण रूप में हृदय से उत्पन्न हो जाता है। Love is something that comes automatically from the heart, साधन की नहीं spontaneously. माने रागानुगा प्रकृति। अच्छा, रागानुगा भक्ति के क्या बोले, दो प्रकार के साधन बता रहे थे। So, बाध्यंतर्यार होय 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 two kinds of bhajan. बाज्य साधक दे करे श्रवण कीर्तन, अंतर बाहर दो प्रकार की साधन भाग। बाह्य शरीर में, So, in the external body, अच्छा, इस शरीर में क्या करते हैं, साधक दे करे श्रवण कीर्तन आदि करेगा, नाम कीर्तन आदि, the devotee will chant holy names, पूर्वक नाम fixed rounds, काल अवसान कृतो निद्राहार विहार विजितो चातन दिनो चयो राधा कृष्ण गुण स्मृति मधुरिमा आनंदेन सन्मोहितो वंदे रूप सनातनो रघुजुगौ श्रीजीव गोपालको। रागानुगा साधक के ये बाहर की ये लक्षण है, शंका पूर्वक नाम आदि भगवत कथा श्रवण कीर्तन। So the external behavior of the Raganuga sadhaka, he'll hear Harikatha, he'll chant holy names, करे श्रवण कीर्तन, Shravan Kirtan with the external body of a sadhaka. अंतर चिंतित देह में, And his internally conceived body, he will रात्रि दिने करे ब्रजे कृष्ण र सेवन। अंतश्चिंतित जो देह जो है, with his internal body, उस सिद्ध देह के अनुभव होने पर वो क्या करते हैं, what will he do? अष्टकालीन लीला आदि के स्मरण आदि। He'll remember the Ashtakaliya Leela and serve. इस प्रकार रागान साधन भक्ति वैष्णव समाज में रागानुगा भक्ति के नाम से परिचित है। जो इस रागानु के साधन भक्ति का जाजन करते हैं, उन्हें क्रमशः अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव आदि के पश्चात So a Raganuga sadhaka passes also through all these stages and attains prema. Then you go to take birth in the womb of a gopi in any universe that Krishna is performing his pastimes. ऐसे साधन करते करते फिर जोग माया की कृपा से So ब्रह्मांड में कृष्ण की लीला चल रही है, उस ब्रह्मांड में गोपी गर्भ में उसको जन्म हो जाता है। so then you take birth in one universe where Krishna is performing his pastimes. संगवशत क्रमशः उनके प्रेम वृद्धि को प्राप्त कर स्नेह मान प्रणय Then महाभाव को परिणत हो जाता है। you attain also Mahabhav. अभी ब्रह्मांड की बात बता रहे, जैसे अभी इस ब्रह्मांड में कृष्ण की लीला हम देखेंगे, Like you pass all the stages also after prema, no? Okay, so now we don't see Krishna performing pastimes in this universe. But when the sadhaka is in a very high class stage, what happens is that शरीर को साधन शरीर को उसको पूर्वा करके जैसे जिस ब्रह्मांड में कृष्ण लीला Jogamaya will make you take birth in the pastime or where Krishna, क्या करते हैं न गोपियों की गर्भों में जन्म लेते, क्यों गोपी गर्भ बिना where Krishna is performing his pastimes, then you attain the body, the birth of a gopi there. Because गोपी विदेह प्राप्त कैसे है, गोपियों की गर्भ में जन्म लेना पड़ता so you have to है। यहाँ पर भी स्पष्ट रूप में कहा you गया have to have the body of a gopi. है, Then for that you have to take birth as a gopi. गोपियों की फिर नित्य सिद्धा गोपियों की फिर नित्य सिद्धा गोपियों की ब्रह्मांड में, उसी ब्रह्मांड में अर्थात जिस ब्रह्मांड में कृष्ण की लीला चल रही है, So in that world where Krishna's pastime is going on, in that universe, गर्भ में जन्म प्राप्त होता है। इसके पश्चात so then you take birth in that. की संगवशत क्रमश उनका प्रेम Then प्राप्त कर by having association of the Nityasiddha gopis, क्रम से then you follow all the stages of developing your love, वो श्री कृष्ण के Sneha, Man, Pranay, Rag, until you attain Mahabhav. किंतु साधन सिद्धा जीव जब सर्वप्रथम गोपी गृह जन्म ग्रहण करते हैं, But the sadhana jivas, sadhana siddha, साधन सिद्ध गोपी देह किंचित प्रकृतम से भी आभास रहता है। यहाँ पर भी कार्य they take birth as gopis, है, क्या बोला, किंचित आभास रहता है। so they have some abhas of the material body, ये जो प्राकृतिक शरीर के जो है आभास रहता है। a semblance of the material body. साधन सिद्ध गोपियों के The sadhana siddha gopis. अंश आभास रहता है, जिसके कारण वह कुछ स्वजाति धर्म गृह कर्म आदि भी करते रहते हैं, कार्य आदि उनको करना पड़ता है। उससे पश्चात वो श्री कृष्ण के सेवा की प्रबल लालसा, वो नित्य सिद्धा गोपियों के संग के प्रभाव से उसको भाव
प्राप्त दूर हो जाता है, then by the influence of the Nitya Siddha Gopis association, काम नहीं this कर नहीं पाते। mood will also go away कृष्ण में तन्मय होने के नाते उनको कहाँ काम कर पाए। because they are completely absorbed in Krishna, so they don't have राधा lust. आदि के बारे में मुझे कथा सुनाया जाता है, ये राधा आदि ये सब जो काम के बारे में सुनाया जाता है। So if we hear about lust or something about Srimati Radhika, राधा जी के बारे में कहा गया, राधा जी जावट में like we hear how Srimati Radhika, sorry, not lust, work. Srimati Radhika is going to serve in किंतु वास्तव में cook. देखा जाए वो समस्त सेवा आदि कौन करा रही है, वो जोगमाया ही कर रही है। Actually, Jogamaya is arranging her, doing all the seva. राधा अथवा लीला संपादन करने के लिए जोगमाया ने ये कार्य आदि को कराती रहती। Jogamaya just perform the pastimes, make these activities. You have to understand. जैसे नरोत्तम दास ठाकुर के कीर्तन में है, Like for example, you see this in the Kirtan of Narottam Das Thakur. कृष्ण चिंतन कर रही है राधा जी, Srimati Radhika is thinking about Krishna. करते राधा की क्या कि कृष्ण के विरह की Then what happened? उत्पन्न विरह उत्पन्न है, Srimati Radhika started to feel separation from Krishna. विरह कृष्ण के विरह विच्छेद होने के नाते उनके आंखों से आंसू की धारा, And because she was thinking about Krishna, Srimati Radhika started crying. But how would she hide this mood from Jatilin Kotila? So then she went to the kitchen and she was cooking. Srimati Radhika was cooking. चूल्हा जलाया, लकड़ी आदि के द्वारा चूल्हा तो जलाया, आग जल रही है। Then she was cooking in the fire, no? So she put some. इतने समय जटिला अथवा कुटिला Then Jatila Kotila came. आ रही है, She saw that they were coming, Jatila and Kotila. कहते हैं बहू तू क्या कर रही हो? Oh, what are you doing? रसोईघर की तरफ आ रही है, तो उस समय जटिला, उस समय राधा जी क्या करती है What Srimati Radhika was doing at that time? ना, लकड़ी में थोड़ा पानी डाल देती है, तो लकड़ी Srimati Radhika on purpose, she put some water in the fire. And when you put some water in the fire, automatically some wood comes. Some smoke comes. Because you're making the wood become wet, right? So that's why some smoke is coming. So Srimati Radhika is doing that on purpose. कुटिला कहती है, अरे रो रही क्यों है, इसके याद आ रही है तुम्हारा, बताओ तो पहले। Then Jatila and Kotila say, why are you crying? Are you remembering your brother or what? जब कोई प्यार अपने पति के Because generally before, ज्यादातर अपने after girls would get married, they used to remember so much their family, like brothers, sisters, mother, father. So girls were like crying, feeling, missing their family. At least for 2-4 साल तक रहा, 2-4 years, they're remembering too much their own families. बोली नहीं। You cannot forget. फिर वास्तव रूप में ये कहा गया, जब तक पुत्र कन्या आदि प्रसव Actually, if the girl hasn't had their own kids in the new family, children, then the girl will always remember so much the brothers and the mother, father. They cannot forget their own family. के प्रति But when they finally have babies, प्रति चले जाते then their mind goes to the हैं, में सत्ता है। babies, like their own children now. इसी प्रकार कार्य पुत्र कन्या उत्पन्न होने पर क्या हो जाता है, So when you have babies, वो जो प्रेम भाग बंटवार हो जाता है then your love goes there, कि नहीं है? isn't it? इसलिए माता पिता के स्मरण तो रहते हैं, भाइयों के तो स्मरण रहते हैं, किंतु So they remember their brothers, है पुत्र कन्या पति आदि में भाग बंटवार हो जाता है। but at that time they have their own children. Then they have start loving so much their own children, they forget क्या रहता है, their family. माता पिता प्यार की चिंतन Generally, the girls, like the young girls, they got married, होता है। so they're always remembering ससुराल में ऐसे their own family. उनके मानो Because now they're living with their in-laws, right? With the husband family. And they feel like they're in the jail with those in-laws in that new house. हृदय में इतने कष्ट होता है, They suffer so much in their heart, but they cannot speak how they're suffering. दिन गिनती रहती है, They're counting the days. When can I come back to my house? है कि नहीं है? Isn't it? मैं अपने प्यार कब जाऊं? When I'll go to my house, see my parents. फिर कुछ दिन के बाद 2-4 साल के बाद But after 2-4 years, when finally they have kids, अपने ड्यूटी एंड रिस्पांसिबिलिटी हो जाता है, then they have so many duties and responsibilities now. बुलाने पर भी कहते हैं हमारे समय नहीं है, Even if their own parents is calling them,
to go to their house, कहते नहीं है, then they'll say, oh, but I don't have time now, it's the time of the examination of my kids. 2-4 दिन के लिए Even if your parents say, oh, my daughter, come to me because I'm sick, then you'll tell your parents, oh, but I cannot because आ जाएगी नहीं, it's not my time for the school of my kid or something. क्योंकि उनकी एक तो दायित्व आ जाता है, ड्यूटी एंड रिस्पांसिबिलिटी है पुत्र कन्या के प्रति, Because you have so much duty and responsibilities to your kids. And also one more point, your prem is now focusing in your new kids, in your children that you just had. वास्तव में सत्य हो जाए, This is true. इसलिए देखो जोग मैंने क्या की, वो सब So what did Jogamaya did? इसी प्रकार से पुत्र कन्या की धारण करने के लिए अनुमति That's why Jogamaya didn't allow the gopis to have children. हाँ समझे, Do you understand? इसके पुत्र कन्या नहीं है, वो सत्य हमारे बेटा हो जाए, क्योंकि बेटा जब हो जाता है कितने The person, those who don't have kids, they think, oh, I want to have kids. But when you have a baby, then you are so absorbed taking care of the kid. ठाकुर के गोपाल है, बोले मेरे बेटा ही गोपाल है, You have a Gopal, but you're not serving the deity. You say, oh no, I'm serving my son Gopal, because so difficult taking care of a kid. बेटा के नाम रख दिया गोपाल, So you give to your son the name Gopal and you say, this is my Gopal. I only serve him. This is true. इसलिए जोगमाया ने क्या की, वो समस्त गोपियों की किसी प्रकार पुत्र संतान आदि That's why Jogamaya जन्म ग्रहण didn't allow these gopis to have any children. नहीं किया, माने उनके सीधी बात उस समस्त गोपियों की So the gopis didn't have any babies, these gopis. इसलिए करे सजातीय धर्म गृह कर्म आदि करते, उसके पश्चात जब श्री कृष्ण सेवा की प्रबल लालसा, वो नित्य सिद्धा गोपियों के संग के प्रभाव से वह एक आप दूर हो जाता है, तब श्री कृष्ण के वंशीध्वनि श्रवण से ही समस्त कर्म बंधन छिन्न भिन्न हो जाता है, वो तत्क्षणात श्री कृष्ण के निकट उपस्थित होकर उनके यथा अभिलषित सेवा करते हैं। यही इसको जो है वर्णन करते जा रहे हैं। यहाँ पर टीकाकार भी वर्णन कर रहे हैं, The commentaries here also explain that सभी साधन सिद्धा ब्रजरमणियों की कृष्ण की सेवा से साधक देव के तीव्र साधन के द्वारा प्रेम एवं गोपी गर्भ से जन्म लेकर गोपी देव प्राप्त की, किंतु they obtained the birth अभी भी उसे as a gopi, पूर्ण रूप से कृष्ण की सेवा की अधिकार योग्यता प्राप्त नहीं हुई। but they were not completely qualified to see Krishna yet, अतः to meet with सजातीय Krishna. धर्म का बंधन होने के कारण वे गोदहन कार्य में व्यस्त थी। So they were busy milking cows and were doing other things. कार्य आदि गृह कर्म आदि करने से, So they were busy so much. यद्यपि कृष्ण सेवा प्राप्ति के लिए सभी गोपियां सदैव उत्कंठित रहती All थी, the gopis are very eager to attain the service to Krishna, but still, प्राकृत भाव by some slight abhas of the Prakrit Bhav, material mood, बंधन से आबद्ध होकर गोदहन आदि कार्य भी करती थी, they were like कार्य आदि stopped by their family and they had to like milk the cows and do other things. साधन सिद्धा गोपियों Who? का कार्य। This is talking about the Sadhana Siddha gopis, okay? जो नित्य सिद्धा जो है उनकी ये The Nitya Siddha, this didn't happen to them. क्योंकि योग में लीला आस्वादन करने के बाद लीला रस प्रकट करने के लिए उनके कभी-कभी योग में Sometimes Jogamaya के द्वारा उनके शरीर प्रतिबिंब बने, उनके एक रूप बना करके कार्य आदि कराते हैं। Jogamaya manifested one form of them आज ये भी to विचार perform the work for them. क्योंकि सजाते कर्म आदि करना उनके संभव नहीं है, गोदहन करना है, रसोई बनाना, For example, to milk the cow, to cook was not possible for them. Why? Because they were completely absorbed in Krishna. विषय में तन्मय रहे, If someone is completely absorbed in something, गृह कार्य आदि कैसे करेंगे? how will he be able to perform the household duties? इसलिए वो समस्त संभव नहीं। So it was not possible for them. So प्रतिमूर्ति बना देते Jogamaya made one और वही statue of them, कार्य आदि करते हैं। and this statue was doing everything. लीला रस संपादन करने के लिए ये समस्त आदि दिखाते रहते हैं। जैसे मैं राधा जी के लिए कर रहा हूँ, दास ठाकुर Like I spoke about Shrimati Radhika, Narottam Das Thakur explains रसोई बना रहे हैं। that Shrimati Radhika was cooking herself, yes, एक्चुअल
ओरिजिनल राधा जी रसोई बनाने के लिए But उनके समय नहीं। but the original Srimati Radhika doesn't have time even to cook. She doesn't have time to cook because she's always absorbed in Krishna. आदि संपादन But करते थे, still, to जो क्या perform the करते थे, Leela, मूर्ति बना करके Jogamaya में कार्य करा देते। creates one like statue of Srimati Radhika, statue, moving statue, okay? Then that's why this statue is cooking. वर्णन हो रहा है ये राधा जी कृष्ण चिंतन करते करते So I told this Leela that Srimati Radhika was so absorbed thinking about Krishna, कृष्ण विरह के जनित उनके आंखों से आंसू आ गए and she started crying. Srimati Radhika started crying. और इतने समय And then what happened? आने लगी Jatila came. हैं? जब जटिला जब आने लगी And when Jatila came, Srimati Radhika, what did she do? हैं? लकड़ी में क्या डाल दिया अंदर गिरे हो गए She put some water in the wood जटिला कहने लगे तुम रो रही from the fire, no? Then smoke came. Jatilas asked, why are you crying? लकड़ी जो है बहुत Then Srimati Radhika said, oh, because today this wood is wet, so क्योंकि इन लोग के हृदय में सदा सर्वदा कृष्ण तन्मय because they are always absorbed in Krishna. कृष्ण सदिश कोई वस्तु देखे Even if they see something similar to Krishna, कृष्ण की स्फूर्ति आ जाता है they feel the spurti of Krishna. सलाइते देखे ये सलाइते माने राधा जी अपने यदि बालों की ऐसे Like if Srimati Radhika sees her own hair, which is black, देखते ही क्या कृष्ण she sees her own hair and she thinks about Krishna. क्योंकि कृष्ण के वर्ण के कृष्ण वर्ण है Krishna is, बाल कैसे his complexion is blackish, and Srimati Radhika's hair also same color. आजकल कोई और कोई रंग लगा देते हैं Nowadays people dye the hair with other colors, लगा देते हैं कोई रेड कलर लगा देते red color or many colors. People हैं dye अपने स्थिति हो जाती according to their condition. है ओरिजिनल तो कृष्ण सेवा में वो बैठी रहती है So original Srimati Radhika is serving Krishna. बैठी हो For example, your original is here, आपके सामने बैठे रहती but है। Jogamaya, देखने वाला आपको नहीं देख रहे प्रतिमूर्ति को नहीं देख रहे ओरिजिनल के Jogamaya will arrange your statue, and then the others will see only your statue, not yourself, क्या your original self. दिखाई नहीं पड़ता हाँ समझे Do you understand? ये ब्रह्मांड भौम लीला में इसलिए का So this is going on in the Brahmanda Bhoma Lila, in the pastimes in this material world. सब करा दिला Jogamaya does all this, arranges all this. इसलिए कहते हैं कृष्ण के जो नित्य लीलाएं जो है उधर जटिला कुटिला नहीं है So in Nitya Lila, there is no Jatila and Kutila. प्रकार प्रतिमूर्ति बनाने के लिए जरूरत नहीं होती So in this spiritual world, it's not necessary to do any किस रूप में है Pratimurta like these statues. मात्र है Actually, Jatila and Kutila, there is only और कोई a जटिला bhav matra, ऐसे नहीं हो जाता like a mood. इसलिए नित्य नित्य लीला की जो है नित्य जगत में अपरागित चित्त जगत अपरागित चित्त जगत में जो लीलाएं जो है So in the transcendental world, हमें ये एक विशेष वैशिष्ट्य बता रहे हैं there's a speciality in the Lila. राधा जी कर रहे हैं But still, to relish the pastime, Srimati Radhika says, जब मैं किस देखते हैं तो when I see my own hair, तब कृष्ण के स्फूर्ति आ जाता है I have a spurti, a vision of Krishna. तो कहते हैं उनके जितने भी कार्य आदि ये कौन कराती सब योग में So everything she does, actually, Jogamaya is arranging. योग में सारे कार्य आदि क्या करते हैं संपादन करते हैं Jogamaya arranges everything. आप तो मैं कह रहा हूँ आप कहाँ तक समझ में आ रहे हैं So, आपके ऊपर निर्भर है but how much you understand about this? समझ में इसलिए योग में सब कुछ करा देती है Jogamaya arranges everything. इसलिए यहाँ पर भी कह रहे हैं ये गोपियां सदैव उत्कंठित रहती थी So the gopis are always eager. कृष्ण प्राप्ति के लिए सदा सर्वदा उत्कंठित रहती They are so eager to attain Krishna. किंचित सामान्य प्राकृत भाव आभास के कारण सजाति कर्म बंधन से आबद्ध होकर गोधन आर्य कार्य आदि करती रहती है But because of some slight गोधन आर्य कार्य आदि राधा जी आदि नहीं कर रही है impediment of some, हम कभी सुना ही नहीं है राधा जी गोधन कर रही है they were like milking the cows and couldn't go. गोधन कर रही है But this is mentioning not about Srimati Radhika. हैं? उनके हो सकता है प्रतिबिंब आदि करते जा रहे हैं Maybe the statue could be doing, विचार दिखा रहे हैं but not herself. क्योंकि वो लोग कृष्ण के लिए ही सब सदा सर्वदा सेवा करते Because they're always serving Krishna. They cook for Krishna. हैं लेके अभिनय के लिए थोड़ी रसोई बनाएंगे हैं? नहीं होगा सिद्धांत में थोड़ा गलत हो जाएगा
I'm sorry, I couldn't follow what Gurudev said. नित्य जो लीला आदि ये बताते जाते हैं, जो अष्टकाल लीला में राधा जी नित्य पता क्या करते हैं? So in the Ashtakaliya Leela, every day Shrimati Radhika comes from Java to Nandagaon. राधा जी रसोई कर रही हो, Shrimati Radhika will cook for Krishna. किसके लिए रसोई कर राधा जी? Shrimati Radhika will cook for Krishna. किसके लिए करेगी वो? And in Java, Shrimati Radhika will cook for whom? यहाँ पर रसोई नहीं बनाती। That's why, okay, now I got. Shrimati Radhika does not cook in Javat for Jattil and Kotila, suppose. She will not cook in their house. जावड़ में कौन रसोई बनाता? So who cooks in Javat then? उनके प्रतिबिंब पैदा करते Yogamaya creates a statue of Shrimati Radhika like that will cook in the house in Javat. हैं। राधा जो है But the original Shrimati Radhika, वो ओरिजिन है, वो तो कृष्ण के लिए बना रही है ना। so the original Shrimati Radhika will cook for Krishna in Nandagaon. ये बात रसोई बना रही है। Yes, Shrimati Radhika will go to Nandagaon and cook for Krishna. This is the original Shrimati Radhika. Yes, she'll cook for Krishna. तो लोक लीला कैसे थे? तो यहाँ पर उनके घर में रसोई कौन बनाएगी? But if this Pratibimba, like this, Pratimurti, the statue wouldn't be there, that arranged by Jogamaya, who would cook in the house of Jatila Kotila? लीला में जो हो रहा है, Because they are performing pastimes like in the material world, like, इसमें लीला, इसमें तो पति के लिए तो बनाना so you have to cook for the husband in the, like in this material world, in the pastime like a human being. घर में तो बनाना पड़ता है। You have to cook in the house. तो कौन बनाएगी? So who will cook in the house? उसकी प्रतिमूर्ति बनाते हैं। So Jogamaya creates this Pratimurti, like a statue of the gopis, like Shrimati Radhika also, कृष्ण to cook in the house of Jatila Kotila. So you have to remember, the original Shrimati Radhika should never serve anyone besides Krishna, never. के चिंतन छोड़ करके Original Shrimati Radhika only cooks for Krishna, only serves Krishna, only thinks about Krishna. अंतर बाहिर She only sees Krishna everywhere, inside, outside. Wherever she looks, she sees Krishna. She'll serve Krishna. इसमें यहाँ पर देख रहे तो राधा जी ओरिजिन राधा आ रही है। So this the original Shrimati Radhika. क्या बोले? जावर से नंदगांव कौन राधा जा रही है? So ओरिजिन राधा जा रही which Radha is going from Java to Nandagaon? Vrishabhanu Nandini Shrimati Radhika, she is going. है। यहाँ पर जो है वो साक्षात बना रही है। कहाँ? नंदगांव में माँ जसोदा की किचन में। So she's cooking in the house of Mother Jashoda, yes. वो उसके प्रतिमूर्ति नहीं, वो साक्षात It's not the Pratimurti, not a statue. That is the original Shrimati Radhika, yes. और इधर यदि कहो जटिला कुटिला आदि के घर में तो रसोई बनाना But if you say, but they also need to cook in the house of Jatila and Kotila, में जो है in Javat, वो कौन बनाती है? who will cook there? उनकी प्रतिमूर्ति कर रही है। Then it's the statue made by Jogamaya. जटिला कुटी के सास तो सास कैसे बनाई? सास कहेगी तू बोलो, सास गोबर थपेगी ना? हैं? सास जो बनती है, सास बने कोई जो सास बने उसके पता चलता है। सास आने नहीं देगी। Like the mother-in-law will always be like सास नहीं आने देगी। like the mother-in-law will always be asking many things from the daughter-in-law, not allowing her even to breathe, बना ले, ऐसे भी बात like asking so many things. है। घर में किसी कारण हो, हैं? तो चलो मानो बना दीजिए, कभी विशेष कारण बसते है। हर रोज थोड़ी बनेगी, सास हर रोज थोड़ी बनाएगी, जटिला कुटिला हर रोज थोड़ी बनाएगी। They asked, but they will not cook Jatila and Kotila. सास तो यही है। Then Gurudev said, yeah, this mother-in-law, they want to rule the house and give orders. Maybe in a special occasion, they will cook, but not always. शासन कर The mother-in-law wants to chastise and rule over the daughter-in-law. So maybe in a special occasion they would cook, but generally the daughter-in-law had to cook. मैंने अभी अपने बेटा की शादी कराने वाले ही है। अपने दर्शन करने के अपने बहू के दर्शन करने अभी विवाह नहीं। So a lady, a woman was about to marry सास गई to a man. विवाह नहीं, सास गई, सास उसके जो है अभी जो अपने बेटा के साथ जो शादी बने लड़की को देखने वाले। So the mother-in-law came to see the new daughter-in-law फाइनल करना है। to finalize the wedding arrangements. है। And the mother-in-law said at that moment, अपने look, आपको बता देती है। I'll tell you how is the situation in my house. तुम शादी करके जब मेरे घर में आओगी When you get married and come to my house, करना पड़ेगा, मैं बताती हूँ। I'll tell you everything you have to do there. मैं घर के प्रधानमंत्री हूँ। I'm the prime minister of the house. सास करिए, मैं घर के प्रधानमंत्री हूँ। I'm the prime minister of the house. सबके
भी निर्देश देना, The job of the prime minister is to give instruction to everyone, मोदी के काम है ना, इंस्ट्रक्शन। like the job of Modi, suppose, like the prime minister of India. क्या है मेरा बेटी She said, my daughter, the mother-in-law said, my daughter is the Griha Mantri, like minister of, I don't know in English, मंत्री like one minister that take, like house affairs. मिनिस्टर जो कुछ है लेकर के आना जाना है, बाजार में जा Another, the minister of the transportation. My son is the minister of, तुम्हारे जो पुत्र like, है ये क्या बनेगा, every, परिवहन मंत्री। minister of transportation means like checking everything has to be taken. Home office, thank you, home office. Yeah, so the daughter of the mother-in-law सब ये कर दिया और ये सारी will be the home office minister. ये तुम्हारे घर में हमारी जो बेटी है सास करी ने है, वो है क्या है, होम मिनिस्टर है, क्या मिनिस्टर, So होम मिनिस्टर। स्वराष्ट्र मंत्री my other son is the home minister. गृह मंत्री हो गया, So one is the home office minister. है? है? ज्योतिला बोल रही है मैं प्राइम मिनिस्टर, So the mother-in-law said, I'm the prime minister. बेटी My daughter, like Kutila, so Jatila said, I'm the prime minister. Kutila said, I'm the home office minister. अच्छा बस स्वराष्ट्र मंत्री मान लो कोई है, और तुम्हारे बेटा जो है And your son, ना, मेरा जो बेटा sorry, जो है, my तुम्हारे son, पति जो है your husband is the और ये ट्रांसपोर्ट minister of the transport. है, जो कुछ भी करना है इसी के हम करते हैं, हमारे परिवार ऐसे चलेगा। This will be तुम बताओ what will happen in my house. Which post do you want? The mother-in-law asked the new daughter-in-law. तो मैं विपक्ष में Daughter-in-law said, I will be sitting in the opposite party against all of you. विपक्ष में बैठ जाता, I will be sitting in the opposite party. जो लोग तुम कहोगे उसके विपरीत रहेगा, Whatever you say, I will tell opposite against. हैं? तात्पर्य क्या है, बड़े तुम्हारे घर में हमारे शादी, So I don't want to get married in your house. Like I don't want to get married to your son anymore. क्योंकि कोई बहू यदि विपक्ष में बैठे If the daughter-in-law is always in the against party, how the house will be able to stay okay? सारी है, Like, so this lady said, वित्त मंत्री से लेकर सुप्त बन, वो भी करने लेकर मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, साथ ही साथ because the mother-in-law said I will be the prime minister मेरे अर्थ रहेगा, अर्थ मंत्री भी रहेगा, and I will be also Artha Mantri. मेरा हाथ, Like I will be in charge of the money. सब मंत्री क्या है, Prime minister and financial minister, गृह के जो कार्य कौन चलाएगा, I will be also in charge, the mother-in-law said. And my daughter should be the Griha Mantri. I don't know proper translation, like the minister that runs everything, like manages everything. मैं जो ऑर्डर दूंगी वो लेके आएगा, Whatever I tell my son, he's the minister of transport, he will bring from the market whatever I say. आज समझ गए? तो वो बोले भाई तुम्हारे घर में हमारी शादी Daughter-in-law said, I don't want to get married in your house. बर्बादी हो जाएगी, It will be a disgrace. ठीक है शादी करके मैं क्या करूँ, तुम्हारे घर में क्या बैठ जाऊँ, विपक्ष में बैठ जाऊँ, Yeah, I'll stay in your house as like a opposition party. पार्टी क्या है, अच्छा करे जो कुछ भी करे उसको क्या The करे, opposition party always, even if you say a good thing, they always tell against. आज समझ भी नहीं, Do you understand? अच्छा भी काम करे तो उसको विरोध करो, दोस्त देखा बोले ये ठीक They always see the fault. They say, oh, this is not proper. वो जब शासन में आ जाते हैं वही कार्य करते रहता है, हैं? आज समझे, जैसे यहाँ पर पुल बनाना है, For example, need to make a pool here. सपक्ष जो है वो कहते पुल बनाना है, विपक्ष क्या करते हैं उसको, So the Swapaksha means the party wants to make a pool, but the opposite party will not allow. Say, oh, this place is not good. यहाँ पर No, this is not proper for the people here and there. पार्टी में आ जाता है, But वो बनाना शुरू but when this opposite party they become in charge, के काम उसी प्रकार they start performing that same thing. Like for example, making the pool. So whether they like it or not, the opposite party will always tell things against. क्या क्या So that daughter-in-law, in like future daughter-in-law said, in your house I'll be the opposite party. Means actually I don't want to marry in your family. आज समझे नहीं, तात्पर्य क्या है, मेरे कहने की यहाँ पर जा रहे हैं, So what I was saying is that नित्य सिद्धा जो गोपियाँ जो होता है, the Nitya gopis, इनकी गृह कार्य आदि जो करते हैं, वास्तव में सब योग में आदि करते रहते हैं, actually Jogamaya arranged their household duties. कराती रहते हैं, आज समझे, Do you understand? और ओरिजिन जो श्रीमती राधिका जो But the original Srimati Radhika वो सब कृष्ण सेवा में ही रहती है, is always absorbed in serving Krishna. सेवा छोड़ करके उनके कोई कुछ नहीं रहता, She doesn't have anything else, beyond the service of Krishna. Doesn't do anything beyond Krishna's service.
So that Shrimati Radhika who comes from Java to Nandagaon, this is the original Shrimati Radhika to serve Krishna. किसकी सेवा नहीं करते Should not serve anyone else. जिसे लगता है नित्य सिद्धांत की सेवा की जो परिपाटी जो है एक मत तो सदा सर्वदा The Nitya Siddha gopis, their service is only for Krishna, always, only. है किंतु जो साधन सिद्ध आदि जो है But the Sadhana Siddha gopis, अपने पति की भी सेवा कर रहे हैं they sometimes they serve the husband, like yesterday I told also. कोई रोटी बना रही थी Some gopi was like making a roti, a chapati. आज नहीं वो रोटी कौन बना रही थी वो So साधन सिद्ध who was performing like this activity or making a chapati that her husband was sitting down? This is a Sadhana Siddha gopi. Yesterday I said that the gopi gave one roti to the husband, one chapati. पड़ी और She was about to give another one, but then Krishna played the flutes. तावे में She just went जलने लगी away from the back door, and the chapati was burning in the stove. करके एक रोटी खा के दूसरे The husband ate one roti and he was about ready to eat the second one. कहाँ गई रसोई Then he saw, में धुआं where is she? Then she came to, husband came to the kitchen and he saw like smoke coming from the stove. धुआं होता है बोले धुआं कहाँ से हवन कहाँ से बोले Is that a fire sacrifice? Is it a fire sacrifice? No, it's not a fire sacrifice. The burning, अरे कहाँ the roti is burning. पता ही नहीं चला बोलो वृंदावन But where is she? He didn't know. तो ये समझते जो है इसने कार्य है है हाँ She's asking, does Javat exist in Golok? If Jatit and Kutila are not there, of course everything is Javat is there? there अरे भाई how Yes, how you will go everything's there. that is the, all the opposite things is what the bhav matra योग में create In the spiritual world, Yogamaya creates these opposite things also, but the Bhava Matra, only moods. the Javad is there Javad is there everything is there all the opposite things is what है भाव मात्र है ये समझते दिखाते रहा अभी कहने पर भी समझ में नहीं आए तुम्हें वो जटिला कुटिला If I speak now, you won't be able to understand. भाव रूप में है There's not that gross form of Jatila Kutila, but in moods they are there. अभी दूसरी बात करें कृष्ण की जन्म लीला तक Even the Janma Leela of Krishna is not there. What to speak of other things? किंतु माँ जसोदा के प्रतीत होती है But Majashoda has this established. So they gave birth to Krishna. लीलाओं के वहाँ पर अप्रकट लीला में दो प्रकार लीला करिए So there are two Leelas in Aprakat Leela, Nitya Leela and Amaitik Leela. कनकर वो अप्रकट गोलोक वृंदावन में दो प्रकार की लीला In Aprakat Goloka Vrindavan, two Leelas happen, Nitya Leela और एक होता है नैमित्तिक लीला and Naimitik Leela. नित्य लीला रास आदि ये लीला तो नित्य Nitya Leela is like Rasa Leela. जोग में इसी लीला को प्रकट संपादन कर देते Yogamaya arranges. जैसे कहते हैं वहाँ पर जावट है Like for example, Javat. वहाँ पर Javat कौन रहती है is there, but who is in Javat? कुटिला है Jatila Kutila generally. लीला कुटी के साक्षात मूर्ति नहीं But there's not a form of Jatila Kutila. मात्र प्रवेश करा देते Yogamaya makes only moods, Bhava Matra. What is this Bhav? द्वारा भक्त करना You cannot explain in words. जीव गोस्वामी पाद टीका That's why Jiva Goswami explained in a commentary. ये वहाँ पर भी है जटिला कुटिला Jatila Kutila are also present in the Aprakat Goloka Vrindavan in the spiritual world, किंतु भाव मात्र है but only in moods. और ये प्रकट लीला जब हो In Prakat Leela, कुटिला की मूर्तिमान साक्षात दिखाई Jatila Kutila is there here directly, you can see them. आदि हो रहे हैं Putana, for example, Putanavad, Putana is killed. उतना नहीं कोई असुर के There's no demons there. There are no demons in the spiritual world. But these leelas of killing the demons are also there. But how possible? मूर्ति सिद्ध कर देते हैं Only with the bhav, ये कैसे the moods. How is it possible? कोई शब्दों के द्वारा You cannot explain in words. It's not possible to describe in words how this happens. So two kinds of leela: Nitya leela and नैमित्तिक लीला Naimitik leela. बहुत आदि जितने भी Killing Putana, for example, and all the things that are opposite जो वस्तु है to bhakti. वो समस्त के वहाँ पर है They are also there in the spiritual world, but only in moods, bhava matra. जो बस Just understand this. चिंतन करने के प्रयास मत करो Don't try to think too much about this, because you'll not be able to understand. हैं? Radharani, she is staying in Javat. But Jatila is there, but Jatila is not the direct murti of
जटिला कुटिला। हाँ। किंतु यहाँ पर जब हो रहा है भौम जगत में जो लीला हो But the रही lila which is going on in the material है world, जगत में भौम जगत में जटिला कुटिला आदि दिखाई पड़ता we see the form of है। Jatilinkutila. ये अभी दिखाई पड़ता है। चलो ज्यादा इसको ज्यादा चिंतन करने के प्रयास करो तो Don't think about this too much. It won't give any fruit. क्योंकि अपने अधिकार के अनुसार करो। Do according to your हैं? qualification. Do you understand? हैं? क्या? हाँ ज्यादा चिंतन कर तो जटिला बन जाओगे फिर अब। If you think about it too much, you'll become Jatila. हैं? भौम देव उसमें है चित जगत एक क्या बोले अपराधी जो है एक नित्य लीला है। नित्य लीला क्या है? What is Nita Lila? रास लीला आदि जो है Rasa Lila, etc. This is Nita Lila. वंशी श्री कृष्ण के जितने प्रकार के मिलन आदि जो लीला The meetings of Krishna, Vamsi Chori, singing flutes. This is Nita Lila. परक्यत्व जो भाव है परक्यत्व भाव में बाधा नहीं हो तो परक्यत्व भाव नहीं But if there's no any impediment for the, then Parakya Bhav is not actually Parakya Bhav. That's why Paramur mood. So that's why Jogamaya creates the moods of Jatilinkotil in the spiritual world also. है। कोई बाधा देने वाला नहीं हो Because there's no one to give impediments, उत्कर्षता नहीं होगा। then Prem will not be so amazing बात समझ में नहीं तो if there are no obstacles. रासलीला की मुख में क्या होता है? So निवारणता आता है ना। the main thing about the Rasa Lila is the Nibaranata, means the impediment of the superiors and etc. सत्य में रासलीला नहीं होती। So for example, there is no Rasa Lila in Swakya, क्या में wedded love. Only in Parakya, Paramur mood, there is और परक्या में Rasa Lila. जो अमोघ वस्त्र भी बताया गया। And you know, in Parakya there are 4 infallible weapons. One of them is Nibaranata. Nibaranata are the obstacles imposed by society and superiors. के द्वारा बाधा प्राप्त For example, निवारणता का obstacles made by husband and mother-in-law. निवारण कहाँ से होगा? So if there wouldn't be mother-in-law, how possible is impediment, obstacle for the Parakya Bhav in the transcendental world? That's why Jogamaya also created this Bhav. शरीर नहीं है। They don't have material body, like not material body, sorry, gross body. लीला में Jatin and Kutila, they don't have gross body in the spiritual world. शरीर है In the material world, they have और वही जटिला कुटिला Bama Vrindavan. राधा जी को बाधा प्राप्त कर रही है। बोले कहाँ जा रही है? And they are giving obstacles to Shrimati Radhika, like where are you going? के क्या बोले अपप्रचार आदि करते रहते। They speak bad things about Shrimati Radhika. इसलिए यहाँ पर अनेक लीला है उसी लीला भी सब है यहाँ पर। But these leelas are also there in the spiritual world. For example, Bandir Bat Katha. कृष्णा राधा आदि गोपियों के साथ प्रेम विहार कर दिया। Krishna is performing pastimes with the gopis and Shrimati Radhika, embracing, kissing, etc. चंद्रावली के जो Then the बोले चंद्रावली की है? क्या बोलते हैं? पैरट parrot of Chandravali तोता सुख जो है वो देख लिया saw और देख रहे चंद्रावली के कहते देखो अभी राधा जी भंडीर वट में and told Chandravali, now Shrimati Radhika is performing pastimes with her friends. उनके हृदय में ईर्षा हो गई। So Chandravali felt envy, like jealous, not jealous. Sorry, she felt jealous, like this co-wife mood. कुटिले को कह दिया देखो तुम्हारे बहू जो So they told Jatilikutila, oh look, भंडीर वट में your daughter-in-law now. राधा आदि गोपी Chandravali said to Jatilikutila, क्या करें? now your daughter-in-law is performing pastimes with Krishna. कृष्ण के साथ विलास कर हैं? देखो जटिला कुटिला क्या की What Jatilikutila they did? के ब्रज में जितने ही वयोवृद्धा स्त्रियां हैं So they believed her and they called all the elders of Braj, like Purnamasi, let's go and catch my daughter-in-law red-handed today. अच्छा ये तो लीला चल रही है पर So this lila is going on. इतने समय राधा जी की भी एक सुख है But Shrimati Radhika also has a parrot, female parrot, Sari, and the female parrots of Shrimati Radhika is always checking, and she saw that Jatilikutila were coming. The parrot of Shrimati Radhika saw and told her. सुख जो है यहाँ पर कह दिया ये जटिला कुटिला आ रही है तो साथ ही साथ कृष्ण क्या करते हैं So immediately when the parrots of Shrimati Radhika saw the news, जावट में भेज देते हैं जाओ तुम अपने घर में Krishna sent the gopis and Shrimati Radhika to Javat. नाम आदि को लेकर Go. Then Krishna took Subal पर
Sridham, शादी करने लगे and सबल Krishna को राधा started जी के वश playing. बना दिया And Krishna put Sridham सबल की एक disguised as Srimati Radhika. मुखमंडल के Because Sridham, actually his face is just like the face of Srimati सबल Radhika. के क्या राधा वेश बना दी घूंघट लगा Sorry, Subal. Subal has the face of Srimati Radhika. पहना दी जो कुछ भी है Subal. बिल्कुल राधा जी जैसे लग रहे हैं So Subal was Krishna put Subal in the disguise of a woman, क्या करने लगे like sari, bangles, everything. Then Krishna was like playing, जटिला कुटिला holding hands with her, with him actually. Jatila Kotila from far, they thought it was Srimati Radhika, but when they came close, दौड़ते दौड़ते they came running and they just pulled आता सुबल में सिर्फ राधा की क्या की the veil जो है of the sari of the Subal. खोल दिया Even they opened his cloth. भाई शक्कर उसके होते हैं ना सुबल But Subal is in Sakeras. होता है जैसे कपड़ा पहने हुए हैं बस ऐसे घुमाते हैं ना Just like when somebody pulls a cloth and the person is like, पूरा कपड़ा खोल दिया like खोल गया they opened actually the complete sari when they pulled. And they actually saw it was a boy. शरीर में बस Actually a boy wearing the cloth of a girl. कुछ नहीं रखते गले में एक दुपट्टा रखते बाल बाल Only a dupatta on the, like a cloth, ऊपर में एक दुपट्टा रखते हैं a cloth from the neck, around his neck, कमर में जो है लंगोटी आदि पहन कर रहते हैं छोटा सा wearing a cloth और उसको under, जटिला ने किया कि उसके as an undergarments. मैंने खींचा So Jatila pulled the cloth. बोले द्रौपदी के जैसे दुशासन जैसे Just like when Draupadi, Dushasana also pulls the cloth of Dushasana. When Dushasana pulled the cloth of Draupadi, and Draupadi was spinning, because so much cloth. राधा कहाँ है ये तो सुबल है So in the same way, Jatila also did same with like Subal, and then they saw it was a man, not a woman. It was not Srimati Radhika, it was Subal. He was in disguise of a woman. के बस्तर रामलीला हो गया ये So the Sakas started clapping. Oh, this was like, just like in the Mahabharata, Dushasana pulling out the cloths of Draupadi. The same way. इधर Here, Jatila was taking out the clothes of Subal, thinking he was Srimati Radhika. खींचने लगे और सुबल भी कम And Subal was also funny. Subal also, he knew, and he's like a friend of Krishna, so knowingly he was spinning, so that all the cloth will go away. कब घूमे तो कपड़ा और भी लिपट जाता है Because if you would spin in the other direction, the cloth will be stuck in his body. But he was spinning in the proper direction, कपड़ा so all the 7 meters of और सगा लोग of cloth were coming out because he was pulling and then he was spinning in the proper direction and all the cloth was coming out. जानबूझ And के ऐसा हाथ friends also clapped. और उधर जटिला कुटिला देख करके तो हैरान हो Jatila Kutila saw, they became इसके in बाद shock. सन्यासी आदि समस्त Then Purnamasi and all the elders of Raj, आदि आते they came, they saw हैं लगे अरे and started chastising Jatila Kutila. You are not ये राधा ashamed. किसने कहा तुम्हें दिखाई नहीं पड़ा You cannot see. She's Srimati Radhika. Oh, he's a boy. They are playing. She's not Srimati Radhika. There's no girl here, no girl, nothing. अरे ये बात सुनो घर की बात बाहर And another point, you should not speak your household problems on the street because people will then later criticize you. बहू के गाली देने के बाद किसको गाली देती है सास को तुम So, अपने सास अपने बहू के यदि बुराई करो so if you speak bad things about your daughter-in-law, पड़ोसी किसको पहले गाली देंगे actually the neighbors, first of all, they will criticize the mother-in-law, saying, you are not ashamed. घर में ऐसे ऐसे Oh, this happened in your house, this daughter-in-law, this and that. So, it's not good to tell ऊपर फेंको तो कहाँ पर आता है like these things of your house to others, then people actually will criticize you. Just like if you spit facing up, the saliva will fall on your own face. क्या है जटिला कुटी के अच्छी तरह से आधा कुट देंगे So all the elders of Raj, they like beat it. और उसके गले में They beat Jatila Kutila like a little bit and said, "Oh, you're foolish. You are not ashamed. You called us to see your daughter-in-law red-handed, यही करने दो and what is it? शर्म नहीं Krishna was with his friends. You are not embarrassed." बात है और तुम उसे कपड़ा खींच रहे हो यदि तेरा बहू यदि राधा यदि हो जाते तो यहाँ पर क्या करती बता And you're pulling the cloth of the boy. Imagine if it was Srimati Radhika, what would you do? Even if you was your daughter-in-law, you should not do that. पूर्णवासी देवी तो सब जानते हैं Purnamasi knows everything. किंतु उसके उल्टा करके करें अच्छा जी बता ठीक है Purnamasi saying, okay, दूसरे के पुरुष के साथ suppose your daughter-in-law was with another man. You have to solve this inside your own house, not to telling you everyone. बाहर के हम लोग बाहर के हैं जैसे हम लोग But you're calling everyone and pulling the cloth of the person that was supposed to be your daughter-in-law. निंदा कर रही क्या तेरे लज्जा शर्म नहीं You are not embarrassed to do that. अरे वाह, इसको कहा जाए क्या करते हैं
अदरक कूटना है ना, अदरक के क्या करते हैं हम लोग कूटते हैं ना, एक बार में नहीं होता, बार बार ऐसे करते हैं। उनको जितने भी गलती के जितना कुटला So just like I think बेगुन में कीड़ा लगने से जैसे so they're like chastising. I don't know if beating or chastising anyway, but like chastising Jatili Kotila. And you know, like the eggplants, if you the 2-4 days the eggplant is in your house, the eggplant it becomes completely shrunk and like wrinkled. And when there are also so many insects in the eggplants, the eggplant becomes all wrinkled. So the face of Jatila Kotila was just like that at that moment. And they said, okay, भाई पूर्णिमा we'll not do this anymore. में उनके आधा उन्हें अदरक कूटने लगी, ऐसे कहने लगी Because Purnamasi and others, they were chastising so much Jatila Kotila. पानी पानी हो गई, बोले आज से तो ऐसे मैं कभी नहीं करूँगा। So they promised, okay, we'll not do this anymore. बोलो वृंदावन बिहारी लाल है, आजा इसी की कथा है लीला रस। This is Lila Ras. गोविंद की ऐसी ऐसी लीलाएं होती है। These kinds of Lila take place from. मेरे कहने की तात्पर्य है नित्य सिद्धा आदि जो है परिचय दो प्रकार की लीला कर रहे हैं। So two kinds of Lila was telling. लोग वृंदावन में In the transcendental world, there are two Lilas. लीला और एक Nitya Lila and Naimitic Lila. लीला तो हो रही है, सब प्रकार की लीला हो रही है। All the Lilas are going on. This is true. भी वहाँ पर है, Jatili Kotila are also there, but not in the gross form. आप मत प्रकाश करें। Only above Matra. Even Putana is also there. लीला हो रही है क्योंकि वहाँ पर Putana Vadalila also means Putana being killed, but there is no form of Putana. उनके हृदय में ऐसे एक भावना बोलते हैं But they feel in their hearts, oh, today उतना को Krishna killed Putana. वहाँ पर भी जन्म लीला भी Also, there is no Janma Lila there. बात करें, हम नहीं करें, I'm not saying who said Jiva Goswami. इसलिए जीव गोस्वामी बात कर रहे हैं टीका में, वहाँ पर भी Jiva Goswami told in the वृंदावन में commentary, जन्म लीला भी नहीं, there is no Janma Lila in Goloka Vrindavan. गोस्वामी वर्ग कर रहे हैं। The Goswamis are explaining. किंतु तथापि वहाँ पर जन्म महोत्सव मनाया जाता है। But still they celebrate आनंद भाई the birth of Krishna there also. हाथी दिलो, घोड़ा दिलो और दिलो, हैं बुढ़ों के क्या दिया, पालकी दे दिया। So Nanda Maharaj gave to the old people palanquins because they couldn't walk. For the young people he gave में बैठ करो, horses because you can sit on a horse and walk very nicely. जवान लड़का या लड़की क्या चाहती है, The young boys and girls, they want लगा करके चलो, to sit on a horse and 15-16 jump with the horse. Those who are 15, 16 years old. I see in the Western countries, they are walking so quickly, like बूढ़ी हो जाती in the horse, no? Galloping and jumping with the horse. But when you become old, है, पालकी में बैठ, you cannot ride a horse. कीर्तन में है कि नहीं है। You cannot ride a horse, you need a palanquin. हमारा जो मिठाई So the Kirtan explained how was the party of Krishna's birthday. What were the gifts that Nanda Maharaj was giving. So Nanda Maharaj gave laddu and peda बाद में काट करके खा सकते हैं, to the young people because they could bite the laddus. But to the old people, बोले हलवा, he gave halwa. लस्सी No, he gave lassi to the old people पीने के उनके दांत नहीं है, because the old people they don't have teeth, so that's why they could drink lassi. They couldn't chew. If it was a sweet like peda or some laddu, you have to chew. So that's why ये सब हंस रस करते रहते this is actually Hasaras Katha. हैं। तो ब्रज में ये सब लीला होती जाती है, Very funny. So all these leelas are going on in Braj. वहाँ पर भी है ऐसे Braj is full of Ananda. These leelas are also there. कृष्ण के जन्म की लीला, कृष्ण के जन्म नहीं हो रहे, There's not the Janma of Krishna. Krishna is not taking birth, but they are celebrating the Janma Leela there. इसलिए अप्रकट गोलोक वृंदावन में दो प्रकार की So two kinds of Leela in Prakat Goloka Vrindavana. Nitya Leela and Naimitic Leela. ब्रजालिक तो यहाँ पर तारका लीला, Indrajalik is like in this world, like in Dwaraka, this is another thing. हो गया समय हो गया। Time's up. यहाँ पर जो कह रहे हैं एक थोड़ा बहुत सिद्धांत तो मैं भी बार बार कहा था So one Siddhanta also I tell again and again. कि पायंत पायंत शिशु न पह, हाँ, ये अपने पुत्रों की जो है वो क्या कर रही है, स्तन पान करा रही है। So some gopis were like breastfeeding. यहाँ पर करें Not breastfeeding. Sorry, they were शिशु का से तो feeding milk. उनके पुत्र कन्या आदि थी,
But then you say, so the gopis had kids. You may have तो this यहाँ doubt. पर कह रहे हैं पायंत सुतानुस्तनम, पुत्रों के पायंत सुतानुस्तनम यहाँ पर है, शब्द है। So the word, but in the verse it mentions that they were giving milk, but to the children, their own children, or what? पायंत Payantu? पय लिखा है, पय माने Paya means milk, दूध पान करा रही, like giving the milk. पान करा रही किससे मतलब नहीं अपने स्तन पान But doesn't mean they were breastfeeding. नहीं कहा। It's not the same word. पायंत सुतानुस्तनम, पायंत शिशु न पय ऐसे शब्द लिखा गया। पायंत शिशु न पय, So giving milk to the babies. जो है छोटे छोटे बालक के क्या कर रही थी, The gopis were दूध पान करा रही giving milk थी। to the babies. पायंत सुतानुस्तनम अर्थात पुत्रों के स्तन पान If the verse was put mentioning राष्ट्र की the word that they were actually breastfeeding these children, this is different. But it's the word, क्या हो जाता है, the verse doesn't say this. सामंजस्य नहीं बना। Otherwise, you could not reconcile this point with the Rasa Leela. That would mean that the gopis had children, अरे उनके उनके अपने पुत्र ही नहीं है, because they were not giving milk to their own sons and daughters, like not their own children. जो पान करा रही थी, यह सुनकर कृष्ण के प्रेयसी गोपियों की पुत्रवती मानना उचित नहीं है, स्पष्टीकरण कर दिया। It's very clear. ये तीसरे कहते हैं, कोई कोई कहते हैं जो है अपने स्तन पान करके, Some people say they were breastfeeding, but it's not mentioned here. It just says they were giving milk. They could be giving milk of a cow to the, बकरी के दूध पान करा रही, or giving milk of the goats, पान कराई। but not breastfeeding. पर मूल श्लोक में लिखा गया, The main verse explains, original verse means they were giving milk, किंतु कुछ लोग जो but some people, के दुग्ध पान करा रही थी, यह सुनकर कृष्ण प्रेयसी गोपियों पुत्रवती मानना उचित नहीं है। so it's not proper for you to understand the gopis had children because of this sentence. जन्म देते Actually, you only have breast तो हुई, and milk in your own breast if the children is yours. इसलिए सुखदेव गोस्वामी पाद भी जब कथा को That's why when Shukadeva Goswami told this katha, विचक्षणता से बोले, एक एक शब्द he spoke all the words very carefully, choosing them very carefully. कराते ये बता देते If you mention here they were breastfeeding, then करना पड़ता था। everybody should understand they have kids. But here's not mentioning this. Just said they were giving milk to children, but not breastfeeding their babies. Different words. शिशुओं की दूध पान करा रही थी, यह सुनकर कृष्ण प्रेयसी So the beloveds of Krishna, की मानना उचित नहीं है। you should not think about this that they have children. श्रीमद् भागवते गोपी मातरो पितरो पुत्र भ्रातरो पतश्च विचिन्त्यो जगन्तन्तो मां बंधु साधवम, ये गोपियां तुम्हारे माता पिता पुत्र और भाई बंधु ये सब तुम्हें ढूंढ रहे हैं, अपने आत्मीयजनों की इस प्रकार दुख देना तुम्हारे लिए कदापि उचित नहीं। ऐसे कुछ लोग ऐसे समझ सकते हैं कि रास्ते में कुछ पुत्रवती गोपियां भी आई थी। Some people might think that the gopis that came to Rasa Leela, some they had children, but Jiva Goswami told clearly प्रति परिहास करते हुए ऐसे बात कह रही थी। यथार्थ रूप में रासनायिका गोपियों की कोई भी पुत्रवती नहीं। actually no gopi that went to Rasa Leela had children. और ये विशेष ध्यान देने की So you have to give special attention to this. देने के बाद जो मैंने उस दिन भी कहा था, The other day also told, पुत्र करना तो होना कि बहुत दूर की बात। what to speak of having babies? They didn't have period yet. How possible having babies? They had no babies of their own. इसलिए The gopis. हमारे गोसाई वर्ग जो है, विशेष गोसाई Our Goswamis, especially Jiva Goswami, he explained this, so we have to hear what he's saying. इसमें करें इस प्रकार साधन सिद्ध गोपियों का गोदहन आदि सजातीय धर्म, भोजन पकाना आदि व परोसना आदि गृहकर्म, शिशु पालन आदि स्नेह व्यवहार या परिवेशन आदि रमणीय के श्रेष्ठ धर्म तो कुछ भी नहीं था। उनमें केवल मात्र स्नान भोजन आदि देह धर्म का कुछ आभास मात्र था। यहाँ तक भी उनकी देह में उनके आवेश नहीं था।
So they are not absorbed in their bodies. सुख का है। भोजन शयन आदि उनकी क्या है? केवल So sleeping, eating, everything the gopis were performing उसके भांति होता है क्या? was just like some, जैसे एक प्रभाव चलते रहते ना, like a habit from the body. उसके कहा जाता है क्या? इसी प्रकार कुम्हार जो है Just like, the चलाने person who is making a pot जो ना सदुर made of clay. They turn the wheel घुमा देते हैं, to make the pot made of clay. So ठीक उसी they turn once, spin that wheel one time, then the wheel is moving again and again. So when, अभ्यास like this bodily activities of the gopis, like eating, sleeping, में उसको नहीं था, actually they were not doing this. It was just like automatically going. ना करे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता था। There's no difference for them to do this or not. हम एक दिन स्नान नहीं करें, If us, for example, if we don't bathe for one day, then स्नान नहीं करो, we'll stain. शरीर में क्या होता Stain? No. Stain. No, what's it? है? ये हर रोज हमारे चमड़ा Like with bad smell. है, 2 days without taking bath also will सूख जाता stain, so much bad smell. Because है। आ जाए ना, उसको घिसो, actually, if you sweat and you can actually rub your skin, you see the skin is coming out. So we have so much stink things. So because we have the material body and like every day actually our skin is renovating. कहाँ से मैला है? So this dirt, if you rub your skin, is coming because your skin is changing also. देश में देखा जाता है वहाँ पर जूता पॉलिश करने की जरूरत नहीं होता, एक महीने पहनो तो धूल है ही नहीं, So there in England, America, etc., there's no dust तो बारिश होती है, because it rains so much. So there's no dust in England, America, these places. पॉलिश कर लो तो एक महीने चल जाता Like you can clean the house only one time of a month because there's not so much dust. है। घंटा यदि But in India, आप आकर ना दूसरी after 1 hour, पॉलिश करना पड़ेगा, इतना धूल जम जाता like every hour you have to clean everything again because there's so much pollution and this dust on the है, air. आदि पड़ते रहते हैं। This dust. इसलिए कह रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ, So I'm giving this example. इंग्लैंड आदि विदेश में In England and Western countries, you don't need to तथापि वो लोग dust so much, but still people clean the house. स्नान करते हैं, Like I'm mentioning, have, लोग ऐसे भी करते ही नहीं, ऐसे have to भी take करते हैं। bath every day. इतने जो पड़ते हैं ना, हैं, ठंडी इतने पड़ते हैं, वे कहाँ स्नान करें? But in the Western countries, मैंने केवल it's so रात रात cold. Sometimes only for 6 months, only night time. Like no sun for 6 months. So yeah, sometimes they don't take bath. स्नान करें। How to take bath अरे in these हमारे यहाँ conditions? जब ठंडी पड़ जाते हैं ना, Here also when it's cold, maybe also they won't take bath if it's too cold, isn't it? है कि नहीं? Isn't it? कपड़ा पहन करके रखते हैं, You're under so many layers of cloth. दिन तक Maybe for 2-3 days you're not taking a bath in the cold time. और गर्मी के समय दिन में 3 बार 4 बार स्नान But in the summertime, I would bathe maybe 3 or 4 times per day. जमता रहता है। So much dust and all this, क्योंकि शरीर तो चरम ही था, sweat, everything. So इसलिए उनके शरीर में किसी प्रकार body of the gopis दुर्गंध आने की भी संभावना ही complete transcendental, so they wouldn't smell, not stink, not at all. नहीं है। इसलिए उनके भोजन पानी केवल जो जोगमाया की इच्छा से करते हैं। Actually, eating, like their activities like eating, etc., Jogamaya was arranging what was not necessary for them. वो समझते कभी देह स्मृति नहीं है, The gopis had no bodily perception of their own bodies. ये शरीर है उनका, They had the transcendental body. तन में होते थे। They were completely absorbed in Krishna only. इसलिए ये समझते जो है वर्णन सुंदर दे रहा है। Beautiful description. आगे की जा अब यहाँ पर कहते थे है, बहुत सुंदर ये श्लोक में वर्णन होता है, 7-8 श्लोक में So this verse is very beautiful. सुंदर इसमें वर्णन किया है। आगे जाकर के हमारी कुछ गोपियां जो है, जो साधन सिद्धा जो इसके अभी अनुराग नहीं हुआ, So some gopis who hadn't achieved anuraga, नित्य सिद्धा की संग होने पर भी अभी कृष्ण के प्रति even though they had the association of the Nityasiddha gopis, they didn't have anuraga yet. क्या कि उनकी रोक दिया, उनके पति को द्वारा So Jogamaya stopped them also. उनके घर में Means their husbands stopped them and didn't allow them to go, and their husband kept them in their house बंद कर दिया। and like locked them in the house. उनके पता नहीं था कि कृष्ण के लिए जा रही मिलने के लिए, They didn't know they were actually going to meet Krishna. क्योंकि ये पता नहीं था Actually, the gopas, the husbands, हमारे बहू जो है व पत्नी जो है कृष्ण के लिए मिलने के जा रहे हैं। they didn't know that the gopis were going to meet Krishna. इतना नहीं कहते, कभी कभी ये सोचते हैं इनके क्या दिमाग खराब हो But they thought that maybe they had gone crazy. खराब हो जाता है ना, किसी को क्या हो जाता है,
Like sometimes a person दिमाग खराब हो जाता है। goes crazy, तो कोई भूत पिशाच इसमें चढ़ or गया, maybe they thought they were possessed by ghosts. ये सोचते हैं। That's why they were doing this मानसिक रोग strange हो गया, thing, or some mental भूत पिशाच problem, अथवा मानसिक रोग हो गया, some ghost or mental problem. इसलिए ये दौड़ रहे हैं। That's why they were just running away out of the house. ये कृष्ण की मिलने के लिए जा They रहे हैं। didn't think that they were going to meet Krishna. They never thought about this, the ये husbands. तो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, हम लोग सोच रहे हैं जो कृष्ण की We are reading and we understand that they are going to meet Krishna, but their mother-in-law and husbands, they didn't know ये लोग कृष्ण से that the gopis wanted, they were going to meet Krishna. If they would know, then they would हमारी पत्नी के साथ में ऐसे like come for Krishna, like they would want to ask Krishna, what is this? You want to enjoy with my wife or something? पति आदि के पता नहीं था So that's why Jogamaya arranged that the husbands of the gopis, they have no clue. They had no clue जो है कृष्ण के मिलन के लिए जा रही है, that Krishna was going to meet Krishna. Mother-in-law, no one knew. दिमाग खराब। They just thought they had gone crazy. ये ग्रह Or maybe some ग्रह आ गया, नष्ट ग्रह Nashtagraha. Do you know what is this? बैड वो आ गया, क्या बोले Bad planets. ग्रह आ जाते किसको ग्रह Some planets with bad influence in your birth chart now giving influence at that moment. उस ग्रह यदि आपके यदि अनफेवरेबल So if some graha planet is not favorable to you, आपको बुद्धि को that graha सब व्यवस्था के गड़बड़ कर दी can destroy your intelligence. यहाँ तक भी आपके बिजनेस भी गड़बड़ हो जाता Even your business can also go bad ग्रह माने क्या बोलते हैं खराब हो जाता if that graha है is दोष गृह दोष नहीं ग्रह दोष graha dosh is like a problem in your birth chart, like in astrological moment according to your birth chart, and the planet is giving bad influence like this. ऐसे हो जाते इसलिए वो जो है वो ही चिंतन कर रहे हैं हमारे बहू के So these husbands were thinking, our wives, कोई ऐसे अपग्रह maybe they have some bad planet influence over them now. वो ऐसे बाबरी हो That's why they became crazy. आ समझे कोई कहते हैं ना मेरा पति जो है Some people say, oh, my husband drinks alcohol. When? On Sunday. संडे के लिए कुछ करो Maharaj, do something for संडे Sunday. के लिए उसे काम कहीं वो ज्यादा पी लेते हैं हैं? मुझे वो बता रही ना That lady was telling me. कोई कहते ना ये उसके कोई ग्रह का दोष है I think my husband has a problem in his planets जो है ऐसे क्यों because only he does bad things on Sunday. तो ये बात नहीं है You know, Sunday is a day of a specific planet. So, और जिसके पास जाओगे ना वो मैंने उस दिन कहा ना but I said it's not necessary about this. वाला है ना वो तो 8 10 15 20 ऐसे So, but there are some sadhus. They will tell you that, oh, I'll make this puja, that puja, and actually take money from you. अरे तेरे पति Oh yeah, your husband, शराब पीता है he drinks alcohol. नशा करता है He does intoxication. तो देखो जो बोलते हैं उसके चोक आ जाता है अरे महाराज आपको कैसे जान लिया Maharaj, how did you know? मैं सीधा महात्मा हूँ Oh, I must see the Mahatma. I know everything. The saint will tell anything, then था कि बोलने के लिए शैली से पता लगा so like a way of speaking that actually you pretend you know everything and you captivate the person. लेते हैं मेरा पति जो है Actually, you yourself told that your husband is drinking, उस दिन नहीं बोला वो but you told another day, and the sadhu remembers. So he's like, oh yeah, I know that the husband drinks. And you even forgot you told. They're like, oh, how do you know that? Oh, I know everything. कार चला करके जाकर ना Oh, that day जो है क्या बोले बिल्ली when you were driving the car, there was a cat that crossed the street. Nah, Maharaj, how did you know I saw a cat? But this happens to everyone. Sometimes you see a cat. So ऐसे ऐसे जो जो पैसा कमाने वाले साधु So these sadhus who want this cheating sadhus, they want to take money from you. They'll speak many things, and they'll just make you believe in them. जो बोल रहा है यही Then they'll make you think that whatever you say, whatever they say, it's true, and महाराज you think they are great saints. है बोले अरे हाँ इसलिए तो भगवान ने मुझे भेजा तेरे पास Then he'll tell you, oh yeah, that's why Bhagavan sent me to you for your benefit. इसलिए हमारे पास है बच गई Come to me, you're protected now, you're saved. लूटने वाला था Otherwise, you're about to lose everything. Maharaj, please arrange for me something. आज है तो व्यवस्था सब कर देते हैं Then he'll arrange. सोना दाना सब कुछ क्या करते हैं Give donation of gold, so many things. सारे व्यवस्था यूं कर He'll arrange, yes, he'll take all your money. सारे घर की व्यवस्था कर दी मैंने उनके बिल्कुल जो था वो भी उसको जगत में ऐसे साधु बहुत पड़ा रहता है There are mनी sadhus like this. लोग
लोग उसके मानते हैं वो सत्य है, People think that what they're saying is true. चमत्कार के नमस्कार कर देते हैं। They're amazed by this, thinking that they have some power. There's so many people like this. आज और विशेष करके स्त्रियां उसी चप्पड़ में क्या हो जाता है, उसमें Especially women में आ जाता है become like और सारे पैसा mesmerized by them. पैसा निकल They take all the money from their husbands and give to this kind of sadhus. महात्मा के दे दे, Women specifically. है कि नहीं? Isn't it? ऐसे है? वो काल तो बताया घी वाला जो बताया था। Yesterday I told the story of that sadhu and the ghee. Oh daughter, दिन आने वाला है, a good day is about to come in your life. आप बोल दो पहले पहले उनको जितने भी So first of all, you tell to the woman क्या बोले bad things like, oh. हैं? बैड जो सब बला दो, फिर उसके बोलो Then you tell, oh no, but a good day is about to come. I'm seeing a good day is about to come. समय की करो, ये करना पड़ेगा, ये ताबीज लगा दो, Use an amulet. इस ताबीज में कुछ है ही नहीं, उसे मंत्र फंत्र कुछ जानते But there's no any mantra inside that amulet. Amulet? Like a small thing like you can use. वो काला जो ये होता है ना, बाल होता है ना, उसको काट करके लाता है, So actually he brought hair from the tail of a horse. He put inside the amulet, you know, the small thing, and he gave to you for using, and you think something important is inside. एक काम करना, चांदी के एक ताबीज ले आना, Okay, ताबीज समझते हो? bring a silver amulet. हैं? आ समझते हैं? हैं? ऐसे ऐसे करके मंत्र फंत्र तो कुछ आता ही नहीं, So he doesn't know any mantra also. He doesn't have any mantra CD. तभी तो होता है कुछ नहीं, वो भी उसके कुछ नहीं है, मंत्र फंत्र But if it was really mantra CD, then maybe some result would be there. But the sadhu बाल होता है actually has no mantra CD, nothing. He just cut ताबीज के अंदर में, the hair of the tail of a horse and put inside the amulet and said, "Don't show this to anyone. इसमें जो है मैं भर दिया, जो जिसको दिखानिया तेरे अनिष्ट कर Don't show to anyone. ढंग से हो जाएगा, Then otherwise you मत दिखाना, don't even show to your husband. Otherwise you lose everything." और इसको ऐसे टाइट करके बंद ये कर दे, He put it very tight. बस ये मम भी नहीं है, उसको पता है, इसको ये कर लो, सुनार के दुकान में जाओ, उसको पक्का जो टका लगा दो, कहीं तुम्हारे पति उसको फिर खोल कर So you have to go to the goldsmith and make it very sharp and sharp. I don't know, like close it very nicely so that nobody can open these amulets. No, the amulets. मंत्र सिद्धि करके कुछ भी करते If the sadhu at least had mantra CD, some perfection in the mantra at least. But no, they are completely cheaters. They don't. So many you can find like this. They're completely cheaters. Completely. 8 बजे चलो, 8 o'clock. Okay, let's go. मेरे कहने की बात है, यहाँ पर भागवत में आ रहे हैं, इसलिए उनके पति लोग क्या So the Bhagavata explains. इनके कोई उपग्रह बा अपग्रह The husbands of the gopis thought they were having the influence of some bad planet. है, इसलिए ऐसे आ गए, ये समझ Planets like constellation, these stars, no? Like this. आदि शांति किसमें होता है? Actually, all stars, planets, and constellations, they will be भगवत happy with you if you chant holy names. नाम से कोई और वस्तु है ही There's no higher thing than holy names. नहीं। यदि तुम्हें दिखाई पड़े, हम मानते हैं, ठीक है, आपके कोई ग्रह I know that maybe some nakshatra, some constellation of planet is not favorable to you. This is true. This happens. उसके शांति के लिए क्या करना But to pacify this situation, you have to chant holy names. पड़ेगा? गायत्री मंत्र जप करो, And chant your Gayatri mantra. Chant Gopal mantra. हैं, ठाकुर जी की पूजा करो, Serve the deity. कृष्ण की पूजा करो, Serve Radha Krishna, Nishingadeva. Chant Nishinghana mantra. That's it. हैं? क्या स्वरूप अपने Jai Shri Gurudev.